Hey guys, welcome to the Drawing Room Experts. आज का एपिसोड is very cricket heavy. जितनी ख्वारी मैंने इस एपिसोड को कंस्ट्रक्ट करने में एक रिसर्च करने में मैंने की है. I don't know. I can't remember the last time I did that much khwari for something like this, but I'm really happy. This is a labor of love. This whole podcast is kind of a labor of love for me, and I really enjoyed the process. उतना ही ख्वारी मुझे करनी पड़ी अपने co-hosts फ़ारूक एंड साहिर को एक जगह पे जमा करने के लिए, because apparently they're very busy. So it was a very very good discussion. I didn't want to have it as a solo discussion. I thought it's always good to have group discussions about a topic of this nature. Just maybe go into depths of discussing like which team toured the best out of Pakistan, India, South Africa, England, and Australia. And I wouldn't say the results will surprise you per se, but I think a lot of the aspects of what we discuss will surprise you, because factually, that's what the numbers say. So it's always good to test your perceptions against facts and statistics, and I really enjoyed the whole process putting this together, because जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें like I was putting it together, I was surprising myself, and I was really curious कि अच्छा, wow, this is amazing how well other teams didn't do abroad. So it's a very good discussion, cricket heavy discussion for all the cricket fans, so I hope you guys enjoy. Thanks. Hurt you anymore. You're underrated. Also, by the way, quick correction. In the middle of the episode, we discussed जो हम लोग stats discuss कर रहे थे. I think I may have mentioned कि the number of matches थे, या जो भी हम stats compare कर रहे थे, those were not number of matches, i.e. they were not like number of test matches or one days that those teams have played. Those were the number of tours that they've done. So a tour may comprise of 3 test matches or 5 one days, right? So मैंने इसको strictly tour की basis पे रखा है. So if for example a team is winning 30% of the time, whatever, so that's 30% of the tours, not the 30% of the matches that they played. So yeah, quick correction on that. Anyway, you can go back to it. Enjoy. I won't hurt you anymore. You're underrated. Yes, I had to see it to believe it. 'Cause I don't matter in the big picture. Hey guys, welcome back to another edition of the Drawing Room Experts. And आज का जो डिस्कशन है वो बड़ा एक मैं उसको कैसे समझाऊं कि ऐसा डिस्कशन है कि आई थिंक मैंने जितना काम इस एपिसोड की प्रेपरेशन में और रिसर्च में किया है, और उसी के लेवल का काम उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और उसका ये कि उतनी ही मेहनत इस एपिसोड को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने में करनी पड़ी, बिकॉज आई हैड टू हैव दीज टू guys with me to sit through and basically go through this episode. I didn't want to do this alone. So it has been a long time coming, but I'm happy that we're doing this. How are you guys doing, Farrukh and Sahir? Very good, very good. आप बताएं. Great. अच्छा, I don't know about you guys, but जब से ये क्वारंटाइन और ये सारा चल रहा है, गेम चल रहा है, साहिर भाई ने कुछ बताया नहीं. साहिर भाई आप कैसे हैं? ठीक है? जवाब नहीं दिया हमने. साहिर भाई की खामोशी में मैं बिल्कुल एकदम मैं वीकेंड का वेट करता हूँ कि बंदा सुकून से और चीजें कर सके बजाय काम के. वैसे आपका काम कैसे चल रहा है? आई हर्ड आपकी नई जॉब वगैरह स्टार्ट हुई. बजा रहे हो उसमें आपकी या नहीं?
मजा आ रहा है, बहुत कुछ नए सीखने को मिल रहा है, काम बहुत है, डिफरेंट इंडस्ट्री है। मजा आ रहा है, ये नहीं पता किसको आ रहा एग्जैक्टली, नहीं, नया सीखने का क्या मिल रहा है डिफरेंट है। उनको प्रोडक्ट्स है ना। उनको उनको? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, वरना वो बोलेंगे ना यार हमने आपको हायर इसलिए किया था कि आप ही संभालो सारा, आप कह रहे हो मैं अभी सीख रहा हूँ। नहीं, ई कॉमर्स में कभी काम किया नहीं है, तभी वो कॉमर्स में काम कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है। वैसे बड़ा एक अजीब सा एक होगा कि आपकी फर्स्ट एक तरीके से ऐसी कंपनी है जिसमें you haven't actually been to the office, you're almost like working like a consultant, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, सिर्फ वो कोई बात नहीं, फेस टू फेस बल्कि इंटरेक्शन नहीं है। कोई फेस टू फेस आ रहा था कि इंटरव्यू, ओरिएंटेशन, सब कुछ वर्चुअल हुआ है। चले, अच्छा, गुड गुड तो गुड ये है। ना हो कि ये सब कुछ खत्म हो, आप ऑफिस जाए और बोले यार नहीं, अच्छा, ऐसा तो नहीं we होता, didn't we didn't sign up for this. ऐसा नहीं होता जूम मीटिंग्स आप कर रहे हो और वहाँ पर उन सब की टीम में इनसाइड जोक्स हो और आप बिल्कुल ही अजीब से एक अलग से कि पता नहीं क्या चल रहा है क्योंकि मैं तो किसी से मिला भी नहीं हूँ, ऐसा चक्कर होता है क्या? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा सब कुछ ये नहीं वैसे है। हाँ, लेफ्ट आउट तो नहीं फील करते हैं हाँ आप वही लोग मैं कह आपस रहा में हूँ अपनी क्योंकि बातें वहाँ कर रहे पर हो, आप बोले यार ये क्या बातें हो रही हैं, क्या हाँ मजाक हो रही है, पर्सनल जोक्स हैं, आई डोंट इवन पर्सनल नो द बैकग्राउंड। नहीं ऑफिस है, से रिलेटेड जोक्स हैं यार, वो देखा है वो जो वाली वाली जो ऑफिस में रूम है उसमें कितना मजा, लाइक यू हैव नेवर बीन टू द ऑफिस, अब क्या उससे कंट्रीब्यूट कर। आप कैसे रिलेट करेंगे उस चीज से कि हाँ, अभी तक तो फिलहाल इस पोजीशन पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जब पहुंचूंगा तो पता नहीं क्या फील होगा। वैसा आपको चाहिए उनको बोलें कि यार एक विजिट आपका ऑफिस में करवाएं वैसे जिसमें ही आप अकेले करा जाए, दे। हाँ, या अकेले जाके देखकर तो आए क्या फील लेकिन क्या है। एक बात है, मतलब हाथ में जैसे मोटी लेके जाऊं गायबाना मारने के लिए। गायबाना आई एम श्योर साहिर भाई को सब पता है कि ऑफिस में क्या चीज कहाँ पे रखी है, कप कहाँ पे रखे होते वैसे हैं, आपका किचन कहाँ इंटरव्यू भी पे। ऑनलाइन हुआ था ना? इंटरव्यू तो इंटरनेशनल हुआ था, मैं तो कनाडा में था उस वक्त। अच्छा क्या हाँ, बात है, क्या तो बात यानी कि वो बिल्कुल ही यानी कि ऑफिस का इन पर्सन का तो सीन ही नहीं हुआ यानी कुछ भी। बिल्कुल आपने नहीं। वैसे ऑफिस देखा हुआ भी है या नहीं है बाहर से? भी या नहीं, आइडिया है काम से, एग्जिस्ट लेकिन तो करता देखा है ही अभी। नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलो गुड गुड गुड। चलो तो ग्रेट। खैर तो ज़ेब बताएं, so what are we talking यार मैं about today? इसमें we were talking about मैं इसका पहले बैकग्राउंड दे दूं कि why are we talking about what we are talking about। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि during this quarantine shelter in place period, I don't know about you guys but I have been like waist समझ लो या even higher depth into watching old matches of Pakistan। तो मेरे YouTube सर्च में अगर आप जाके देखें ना अभी रिकमेंडेशन में, वो पता नहीं कौन कौन सी परफॉर्मेंसेज और क्या ये वो ऐसी इत्तेफाकन ऐसी स्टार्ट हुआ कि एक वीडियो देखी और उसके बाद दूसरी तीसरी, और वो करते करते ना मेरे आई एम श्योर ये मैच आपने ज़रूर देखा होगा बट एक सीरीज हुई थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की इन 2002, ठीक यार है? ये साहिर भाई मुस्कुरा रहे हैं इस मौके पे, मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ, आपने कहा ना हाँ ना, यूट्यूब सर्च, तो आई थिंक वो सर्च वाली बात पे साहिर भाई कहेंगे यार ये सर्च हिस्ट्रीज हम नहीं शेयर कर रहे हैं अपनी, नहीं सर्च क्योंकि रिकमेंडेशंस, वो तो खैर मुझे याद आ रहा है, रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन। वो पता नहीं क्या ऐसा मुझे उससे कुछ याद आया कि रिकमेंडेशंस कोई ऐसा हुआ था ना, किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था और रिकमेंडेशन कुछ अजीब सी आ रही थी तो हमने कहा था यार आप क्या देख रहे हो। आई थिंक हमारे किसी अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा हुआ था। एनीवे तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी अवे, इफ यू रिमेंबर, साल बताएं। 2002, जिसमें अच्छा, पाकिस्तान जीता था 2-1, ओके ओके। ठीक है? तो पाकिस्तान वन एट लाइक इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ बायलैटरल ओ सीरीज, वनडे सीरीज की वनडे बात करें, सीरीज थी, सॉरी आई वनडे। गॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि 2001 के पीरियड में एक और सीरीज भी हुई थी, वो टेस्ट मैच की थी जिसमें हाँ, कामरान अकमल ने नहीं नहीं वो 10 स्टंपिंग्स है, वगैरह में थी। अरे वो वो 10 थी, 10 था, अच्छा वो 10 था, सॉरी। 2001 और 2 की बात कर रहा हूँ यानी कि वर्ल्ड कप 2003 के वर्ल्ड कप से ठीक पहले, है ठीक है ठीक है। ठीक है ना, जिसमें हमारी ऑब्वियसली वसीम वकार एंड शोएब वगैरह थे हाँ वर नहीं ऑन नहीं, आई सॉन्ग। रिमेम्बर, वो एक्चुअली शोएब अख्तर ने ही जिताई थी वो सीरीज, शोएब अख्तर ने जितवाई थी, बड़ी अच्छी फाइनल तरह याद है फाइनल मुझे। एटलीस्ट उसने जितवाया था। तो हाँ, हालांकि तो अच्छा वो मैंने सीरीज और मैचेस मैंने बेतहाशा मर्तबा देखे हैं जस्ट टू मेक हम्म, माई सेल्फ फील गुड क्योंकि एक बड़ी अच्छे अच्छे गेम्स थे वो, और हम्म, मुझे याद भी है कि जब वो गेम्स हुए थे तो मैं देखे थे लाइव, ठीक है? बट फॉर सम रीजन उस जीत का मैग्नीट्यूड आई couldn't really grasp at the time, हम्म, even up until recently I didn't even think about it, तो क्योंकि टाइम है थोड़ा सा, तो मैं वीडियोस देखते देखते मैंने कहा यार दिस इज सच अ ह्यूज फीट फॉर अ पाकिस्तानी टीम टू गो टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज हम्म, ऑस्ट्रेलिया आर्ग्यूबली द टफेस्ट प्लेस टू गो फॉर एनी साइड, ठीक है? हाँ, तो मैंने कहा सच अ ह्यूज थिंग फॉर पाकिस्तान टीम टू गो देयर एंड इट्स नॉट लाइक कोई मिकी माउस वन वन एक मैच था एक मैच जीत गए,
इस तरह वापस आ गए, लाइक प्रॉपर सीरीज थी, 3 मैच की सीरीज। जैसे पहला मैच बुरी तरह हारे थे हम लोग, फिर 2 मैच हम लोग ऑन द डॉट जीत के सीरीज जीते। तो मैंने कहा यार आई डोंट नो, लाइक इस सीरीज के ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करता। तो वन थिंग लेड टू अनदर, मैंने कहा यार आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि पाकिस्तान टीम ने, जो हमारी ये जो लेजेंड्स थे, हाउ वेल डिड दे टूर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। और उससे फिर मुझे हुआ, मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान का निकाल रहा हूँ कि पाकिस्तान की टूरिंग हिस्ट्री कैसी है ओडीआई और टेस्ट के अंदर, तो उसको कंपैरेटिव बेसिकली उसको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं कि यार आई कैंट से कि इट्स गुड और बैड अनलेस आई कंपेयर इट विद ऑल other द countries. टॉप टीम्स, ठीक है। हाँ अच्छा, अदर कंट्रीज में भी मैंने ये नहीं किया कि यार हर कंट्रीज को उठा के, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर, सो दिस होल थिंग जैसा विच आई कंपाइल्ड, और जो आप लोगों के साथ शेयर करी मैंने अभी इस पॉडकास्ट स्टार्टिंग से पहले, इट टुक मी लाइक फ्यू वीक्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना, छोटा छोटा करके क्रिक इन्फो पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, टीम बाय टीम, फिर फॉर्मूलाज लगाए हुए थे, और एक एक करके ना, एक एक करके उस पर काम किया। तो मेरे अंदर ये कीड़ा मौजूद है कि अगर मुझे मुझे इंक्विजिटिवनेस हो जाती है फिर अचानक से ना, कि यार अब क्या करूं मैं इसके साथ, यानी कि अभी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे इसको जानी है तो फिर मैं उसमें घुस जाता हूँ। तो दैट व्हाट लेड मी इनटू रियलाइजिंग कि यार हमें ज़रा सा इस पे बात करनी चाहिए कि क्रिकेट हिस्ट्री में among the top teams that we're going to discuss, which side has stored or fared the best, right? और जिन टीम्स को मैंने पिक किया है इस डिस्कशन के लिए, वो है obviously your usual suspects in Australia, England, India, South Africa and Pakistan. I left out initially New Zealand and West Indies. मैंने उस पर फिर काम भी किया, उसकी उनकी भी इंफॉर्मेशन निकाली, but I didn't embed that into the slide deck that you guys have. What about Sri Lanka? श्रीलंका अगेन, मैं उन साइट्स के लिए मेरे दिमाग में वो ये जो साइट्स इनिशियली जिन पे मैंने काम किया है, मेरी परसेप्शन ये थी कि ये सबसे डिफिकल्ट टीम्स होंगी फॉर एनी होम टीम टू होस्ट, ठीक है। तो श्रीलंका, आई डोंट रिमेंबर देम बीइंग अ रियली टफ टीम फॉर एनी टीम टू होस्ट। आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो प्रीटी श्योर देव लॉस्ट, South Africa they've lost, even Pakistan, they come to Pakistan, it's a one-sided affair most of the time. Actually एक certain time से पहले even India used to be a team जो कि टूर करते हुए कोई इतनी threatening नहीं होती थी, until recently कि India has been a very tough opponent to host. हाँ, लेकिन श्रीलंका, वेस्ट इंडीज आप यू कैन आर्ग्यू के एक उनका पूरा ईरा था जिसमें they were the best side like hands down, but again recently मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही थी, even for that matter New Zealand, they are a very good home side, like people go to New Zealand और वहाँ पर हर टीम, बहुत बड़ी बड़ी टीम आ रही है वहाँ पर जाके, but they've never been very inspiring in terms of like a away side. तो मेरी आई कुड बी रॉन्ग, एब्सोल्युटली कुड बी रॉन्ग, बट मेरी इनिशियली मैंने कहा कि यार इन जो बड़ी टीमों पे काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, एंड देन कंपेयर दैट विद पाकिस्तान, कि यार इनमें से इन लोगों ने किस तरह से कंपेयर किया। तो दैट बेसिकली गिव मी द इंस्पिरेशन टू अंडरस्टैंड कि यार कि क्रिकेट हिस्ट्री में टूरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना उसका इम्पैक्ट रहा है इन टीम्स के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसमें ऐड करी या रिमूव करी इफ़ यू लाइक फ्रॉम द डाटा दैट आई कंपाइल्ड, वो ये थी कि आई डिसरिगार्डेड ऑल द ट्राई सीरीज। जब ओडीआई की बात होती है तो मैंने ट्राई सीरीज़ जो होती है ना कि यार फला सीरीज़ और फला कप और 4 टीमें होती हैं, 5 टीमें होती हैं, जिसमें इफ़ यू इंक्लूड दैट इंफॉर्मेशन इनटू एटलीस्ट पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन, तो उस पर पाकिस्तान में भी शायद उनका कर्व थोड़ा ऊपर चला जाता है, बट मैंने उसको ज़्यादा उस पर वो नहीं किया, वो इसलिए बिकॉज के जब ट्राई सीरीज होती है या 3 से ज़्यादा टीम्स एक आउटसाइड ऑफ देयर होम ग्राउंड खेल रहे होते हैं, तो उसमें लक कैन प्ले अ पार्ट। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल वन इन ऑस्ट्रेलिया इन 96, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान की जो हुई थी, वो भी बहुत अच्छी, विच में वैसे पाकिस्तान एग्जैक्टली उसका भी मैंने हाइलाइट्स देख रहा था, तो उसमें एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया डिडंट मेक टू द फाइनल्स, इट वाज अ फाइनल प्लेड बाय वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान। वही सीरीज है जिसमें मोहम्मद जाहिद भी खेला था।
हाँ ये सब वो जो एक हाँ अजीब सी ब्लू और ग्रीन वाली किट थी ना। ब्लू ग्रीन वाली किट थी, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, आई उसमें रिमेम्बर। एग्जैक्टली तो मैंने कहा नहीं यार वो थोड़ा सा ना लाइक आई वांटेड टू सी प्योर बायलैटरल जो अफेयर्स होते थे, यानी कि पाकिस्तान गोइंग टू इंडिया प्योर So बायलैटरल, basically, this is pure bilateral, no Champions Trophy, no नथिंग Asia Cups, no नथिंग Tri-Series, no Benson एग्जैक्टली and Hedges और हाँ Sahara Cups और हाँ, वो बस जो इसमें ये है कि तीन वो तीन भी टीम। आपके स्टैट्स भी सही मिलेंगे आपको, क्योंकि हाँ आप कंपैरिजन नहीं होगी ना कंपेयर वैसा। वो मैं चाहता था कि प्योर होम और अवे यानी कि होम एडवांटेज और अवे अवे टीम्स का जो जो लैग्स होते हैं ठीक उसमें है। प्योर रिफ्लेक्शन हो है कि यार And कि we're, हाउ we're वेल gonna talk about Test and ODIs both, Test and right? ODIs. And what we're ठीक going to है। do, is essentially we're going to go through all of these teams, and in the end, Pakistan को discuss करेंगे. And like one by one, we can discuss, go through the teams, and I'm gonna leave the forum open for discussion. कि अगर एक किसी एक team पे you wanna have a longer discussion, we can do that as well. But one more thing I wanted to add was कि जब मैं इसमें देख रहा था कि which team fared the better, right? I didn't just consider their win percentages. Okay. I thought drawing away is as good as a win. हम्म, ये मेरा ओपिनियन है इसमें, एंड यू गाइस कैन डिसएग्री इफ यू लाइक, लेकिन मैंने उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंस दी थी। मैंने कहा यार अगर कोई साइड जाती है अवे तो दे ऑलरेडी एट अ डिसएडवांटेज, पिच कंडीशंस उनकी नहीं है, ग्राउंड कंडीशंस उनका नहीं है, अवे है और बहुत सारी इश्यूज होते हैं। पाकिस्तान के हिसाब से मैं देख रहा था कि अगर पाकिस्तान की टीम अवे जाती है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू कम अवे फ्रॉम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड विद अ ड्रॉ। well, I will इट्स अ slightly नेक्स्ट बेस्ट। disagree के इंग्लैंड के केस में, इंग्लैंड में यूजुअली जो है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, बट बहुत हाँ अच्छा रहा, हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर आई वुड एग्री कि ड्रॉ जो है वो हमारे बैट्समैन वहां पे जाके जितना परेशान होते हैं ना, सो हाँ हाँ। अ ड्रॉ नहीं इज एज अ एज गुड एज अ विन। एग्जैक्टली एज अ प्रिंसिपल मैं समझता था कि ड्रॉ को मैं वेटेज दूंगा मैं, विच इज़ वाई यू विल सी इन द स्टैट्स दैट वी आर गोना डिस्कस कि मैंने उसमें देखा है कि विन प्लस ड्रॉ परसेंटेज क्या है। ओके ओके, तो कंबाइंड। ओके। कंबाइंड यानी कि उनका क्या था, सक्सेस रेट, इफ़ यू लाइक, कि एक टीम का सक्सेस रेट अगर मुझे कंप्यूट करना है तो नॉट जस्ट द विन परसेंटेज, मैंने उसमें ड्रॉ परसेंटेज भी अगर ऐड करके देखा तो मैंने कहा कि यार फिर वो कैसे फेयर कर रहे हैं, आर दे मोर देन 50%, आर दे लेस देन 15%। वो एक अच्छा इंडिकेशन है। अगेन ऑब्वियसली विनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पोर्ट्स, और अगर विन रेशो उनका 50, किसी टीम का 50% से अबव है तो ऑब्वियसली यू कंसिडर ग्रेट, बट अगर वो ड्रॉ मैं इसमें ऐड करता हूँ तो आई थिंक दैट्स एज गुड एज अ विन। I think it's a good perspective as well. Ke, do you just give it away or do you hang in there and try and fight for it? Because Exactly, एग्जैक्टली। exactly the point that obviously, I was trying to make, right? कि हाँ, आप at the end of the, you fight till the end, or do you just get give Also up? how hard are you to beat as well, क्योंकि yeah, अगर आप एक न्यूसेंस हो, अगर आप एक अवे टीम हो, आप जाते हो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह, तो आप एक होम टीम के लिए न्यूसेंस बनते हो नहीं बनते, क्योंकि होम टीम आर एक्सपेक्टेड टू विन, दे एक्सपेक्टेड टू वॉक ओवर यू। पाकिस्तान जब इंग्लैंड जाती है या पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जाती है या एनी ऑफ दीज अवे टीम्स, द होम टीम इज एक्सपेक्टेड टू विन एंड डू बेटर, क्योंकि उनको कंडीशंस का ज़्यादा पता है। एंड देन पाकिस्तानी बैट्समैन ऑब्वियसली, अ लॉट ऑफ बैट्समैन फॉर दैट मैटर, दे डोंट डू रियली वेल इन फॉरेन कंडीशंस अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ऑब्वियसली। तो हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर अ टीम टू बी a very stubborn team for a home side कि जिसको हराना मुश्किल हो जाए। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थॉट कि ड्रॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर नॉट बोरिंग इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैचेस। एटलीस्ट आई वुड से कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप एक 5 मैचेस की थी उसमें आप 2-2 करके आ गए या 1-1 करके आ गए, आई थिंक इट्स अ ह्यूज props to the team that is playing away. So without really going into too much detail about that, मैंने कहा कि एक तरीके से प्री सेट में आपके सामने रख दूं कि मेरी ये सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करने के पीछे मोटिवेशन क्या थी और मेरे एक समझ लो कि प्री सेट्स क्या थे बिफोर वी गेट इनटू दिस। तो अभी तक कोई सवाल, कोई कोई ऐसा मसला? नहीं, no questions. नहीं I नहीं, think let's बिल्कुल jump into this directly. ठीक है, तो आई वांटेड टू स्टार्ट तो विद इंडिया। आई कौन वांटेड टू सी स्टार्ट विद टीम है फर्स्ट? इंडिया से स्टार्ट इंडिया करते से हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक ठीक है है। ना? तो इफ यू गो टू स्लाइड नंबर 3 straight away, we start with like their ODI performances, and then we move into, अच्छा मैंने इसमें ये भी काम किया है कि ODI performances, and then I also compared कि which team that they've done away well against. तो फॉर एग्जांपल इंडिया से मैं देखता हूँ तो you've seen like इंडिया का ODI bilateral again,
The bilateral win percentage is 46%. ठीक है, close to half of their ODI tours have been resulting in wins. और draw उनका like they've not drawn much. तो अगर मैं draw का मिलाऊँ तो it's around half. ठीक है, half and half रहता है, which is decent. It's not great, but it's also not that bad. They've done, if you go to this next slide, basically, they've done their best tours against, if you can see, like, क्योंकि मैंने इसमें win percentage और draw जो मैं बात कर रहा था आपसे, win plus draw, तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है. If you see कि यार इंग्लैंड में मसलन उन्होंने सबसे ज़्यादा they've lost, right? They haven't done really well in England on a whole. They haven't done well in New Zealand as well. Pakistan mein, it's been pretty abysmal as well, क्योंकि 60%, I think, over 60% जो उनके वो थे, there have been losses. They've done fairly well in West Indies. Now I wanted to, like, जब मैंने ये information देखी, तो obviously इसमें एक imbalance आया होगा after the न्यूजीलैंड की वेस्ट इंडीज़ की टीम अब वो ग्रेट टीम नहीं थी, तो ऑब्वियसली अब हर कोई टीम वहाँ जाके, इवन बांग्लादेश वहाँ जाके जीत रही थी, तो उसका एक थोड़ा सा इंक्लिनेशन या उसका स्क्यूनेस हो सकती है इसके अंदर. बट ओवरऑल देव डन वेल इन वेस्ट इंडीज़, ओवरऑल देव डन वेल इन श्रीलंका. ऑब्वियसली जिम्बाब्वे वगैरह यू डोंट रियली कंसिडर रियली टफ प्लेसेस टू गो, बट जिम्बाब्वे का अगर आप देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि they've drawn over their ODI series, which is quite strange for an Indian team to go to Zimbabwe and draw series in ODIs, which in this case I would consider it's kind of like it's almost like a loss, right? क्योंकि अगर आप जिम्बाब्वे जाकर अपने रिकॉर्ड अच्छे नहीं कर रहे, then you're not really doing justice to yourself as a team. I still remember, I think their first away win for a long time, away win in any format under Saurav Ganguly was, I think, early 2000s के अंदर when they won in Zimbabwe. और उस वक्त मुझे याद है जब भी वो जिम्बाब्वे में कोई सीरीज जीते थे, तो उस वक्त आया था कि India has won the first series outside of India after like 30-40 years, something like that. तो you could imagine कि एक period होगा for 30-40 years जिसमें Indian team has traveled abroad for ODIs and they've continuously either drawn or lost. So they have won a series. So I think that jinx kind of broke in Zimbabwe, early 2000s ke andar, if I'm not mistaken. South Africa, again, a very difficult place for any team to go, and they've obviously just won about 20% of their games over there. They haven't drawn anything. So if unka win or draw का percentage अगर equal हो, उसका मतलब ये है कि कोई ड्रॉ नहीं हुआ था, राइट? तो वही परसेंटेज निकलेगा ऑब्वियसली प्लस माइनस करके. तो they've done awful over there in South Africa. Very interestingly, in Australia, this is very interesting. That's very interesting, right? So it's almost 50-50, right? It's almost 50-50. अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, the thing with Australia is, अच्छा ODI के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ODI bilateral series against Australia बहुत कम होती हैं. If you remember, whenever you go to Australia to do like जो आपका टूर होता है ना, पूरा ऑस्ट्रेलिया का पैकेज होता था up until very recently, होता था कि आप अपना जाके मैचेस खेलो, टेस्ट मैचेस खेलो, 3 या 5 जो भी खेल लें, उसके बाद आपका एक ट्राई सीरीज होती है, आप उसको कहते थे VB सीरीज, याद है? VB सीरीज या बेंचेस हैजेस का भी होती थी. तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ना ट्राई सीरीज होती थी ODI की. तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि अगर आप देख रहे हो जो यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया हैज़ डन 50-50, वो दैट्स बिकॉज के उसमें वो ट्राई सीरीज वाले लॉसेस नहीं है. And it's also because it's more recent, right? So it's more recent. They've done well. They've recently done well. और अभी जैसे अब देख रहे हैं कि अब जो ऑस्ट्रेलिया के टूर्स होते हैं वो ट्राई सीरीज नहीं होती हैं वहाँ पर. तो अब वहाँ पर बेसिकली अब बायलैटरल ही कंटिन्यू होता है कि आप ODI खेलेंगे या टेस्ट खेलेंगे, T20 खेल के बायलैटरल करके आप निकल जाते हो अपना खेल काल के. पहले ये होता है, इफ यू रिमेंबर, कि वो VB सीरीज होती थी और वो 3 टीमें या 4 टीमें होती थी, तो फिर वो मैंने उसको ऑब्वियसली कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाया, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट represented here in this data. But Australia में they've done like 45% I think, is it?
उनका win It's ratio is actually almost 50%. 50% yeah, actually. it's almost 50%. Yeah. 50% उनका win ratio है, win draw ratio 50% है, and they've lost 50% as well. तो 50-50 रहा है. Zaib, just to clarify, ये जो डेटा आप ले रहे हो ये कितने साल पहले के जा रहे हो आप? अच्छा, ये डाटा जा रहा है क्रिक इन्फो पे जितना भी डाटा मौजूद है ना, I think it's इंडिया from के the beginning of time, जब से रिकॉर्ड हो रहा है. This is beginning of time, ever since हाँ, data is okay. Got एग्जैक्टली. it. मैंने कोई फिल्टर ईयर्स के ऊपर नहीं किया. यानी कि फॉर एग्जांपल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो डाटा होगा वो 1920s तक से जा रहा है या उससे पहले का भी जा रहा है. लेकिन इंडिया, पाकिस्तान जो रीसेंट कंट्रीज हैं, इनमें मेरे ख्याल से 50s से स्टार्ट हो रहा है, आई गेस. तो ये फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ व्हेनेवर दे स्टार्टेड प्लेइंग, वो पूरा होलिस्टिक डाटा है. ये क्रिक इन्फो से उठाया था मैंने. उसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं करी. सो द ओनली थिंग आई फिल्टर्ड आउट, एज आई मेंशन, वाज द ट्राई सीरीज, कि वो ट्राई सीरीज वाला निकाल दी मैंने. So what I found interesting with the Indian, team, and I wanted to throw this out to you guys. Indian team obviously very well known for their batting lineup. And what do you think it says for a very strong batting lineup, or known to be a very strong batting lineup, to do 50-50% almost in terms of overall ODI की उनकी जो away performances rahi hai, it's been 50-50. What do you think that says about their batting lineup? I mean, देखिए साफ बात है, cricket team is not just a batting lineup, right? Right. I mean, we all three of us know that India was never good when it comes to bowling side, right? We all know that since the very beginning, India was a very strong batting lineup. But of course, the batters need a backup of their bowlers, right? Right. Till I would say, I mean, till early 2000s or mid 2000s, I don't remember India having one of the best, any of the world class bowlers in their side, right? I think after when Zahir Khan or Harbhajan, these people came in who started touring in India, and then sorry in Australia, वो एक टेस्ट मैच जीते थे या वनडे जीते थे, उसके बाद उनका जरा सा बॉलिंग लाइनअप आई थी. So I think that plays a major factor in their win or draw ratio in international अच्छा, वैसे उससे पहले जो है ये ओडीआई मैचेस इतने ज्यादा होते भी नहीं थे. ये जो 2000s के बाद या लेट 90s के बाद जो है ओडीआई मैचेस थोड़े ज्यादा होना शुरू हुए, और उसके बाद से आफ्टर सौरव गांगुली एंड देन एमएस धोनी, इंडिया की टीम जो है वो काफी बेहतर हो गई थी. तो दे हैड बेटर बॉलर्स आल्सो. So I think a combination of that actually led to the stats that we're looking at. और इसमें बहुत सारी चीजें इनिशियली जो है वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि they were not as good for India. So let's say them touring पाकिस्तान, राइट? रिमेंबर एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज हर साल होना शुरू हो गई थी. उसमें ओवरऑल इंडिया का रिकॉर्ड वाज एक्चुअली स्लाइटली बेटर. ठीक है. एंड जब आप उसको सिर्फ अगर आप उस एरा को कंपेयर करते हो, हाँ, वो जो बीच में था, क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि एक इंडिया जब आई थी पाकिस्तान, तो वो जीती थी ओडीआई सीरीज, and then Pakistan went to India, and Pakistan won the ODI series. I remember. But अगर overall, if you look at the number of matches and the stats, if you look at the number of matches and the stats overall, they did slightly better, and that's partially because they had a slightly better bowling lineup as well at the time. ठीक है. तो उनकी बैटिंग को जिस पॉइंट पे बॉलिंग ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, उस पॉइंट पे आके वो इनविंसिबल हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता था उनके लिए. अच्छा, वैसे it's a very interesting point जो आपने पाकिस्तान की टूरिंग की बात करी. पाकिस्तान में, as I mentioned earlier as well, their win ratio touring to Pakistan in a bilateral ODI series is just 29%. Yes, they haven't drawn it. Overall, right? So that's overall. That's overall, right? That's overall. वही interesting part है उस चीज का कि overall हमें एज है, क्योंकि शुरू में our bowling used to be so much better. All we had to do was, कि हमारे batsmen को बस they used to just hang in there and get the job done, basically. Do enough basically. ठीक है. अगर थोड़े से रन बना दें तो bowling used to take care of it. वैसे ये सारा डाटा कंपाइल करने के बीच में एक और चीज दिमाग में मेरी आई थी, that kind of like represents here as we look at India, is how important the bowling actually is. Because you can have the best batting lineup in the world, like India did historically, even before the 90s. They had a very good batting lineup. Historically, they've done really well in that department, but that doesn't really translate into away wins unless you have a world class bowling attack. So even which we see
रिसेंटली राइट कि अब उनकी बॉलिंग बेहतर हो गई है, तो अब आप देखें अवे में उनकी विंस कितनी ज्यादा हैं इन सारी कंट्रीज के अगेंस्ट यार, इवन फॉर दैट मैटर माय पॉइंट अबाउट पाकिस्तान वाज द सेम कि हालांकि हमने 2005-6 के बाद आई थिंक नहीं खेली है सीरीज इंडिया के साथ, 7-8 मेरे ख्याल से 7-8 7-8 प्रोबेबली होगा आखिरी, ठीक है, तो उसके बाद बायलैटरल सीरीज इंडिया पाकिस्तान में नहीं हुई है। इवन देन उस टाइम पे जबकि एक्चुअली द बॉलिंग वाज गेटिंग बेटर बट इट वाज स्टिल नॉट क्वाइट देयर, ठीक है, तब भी हम कहते थे कि नहीं वी आर अ सुपीरियर बॉलिंग यूनिट, बट आज आके आप कहते हो कि नहीं नहीं यार इंडिया इज एक्चुअली अ मच सुपीरियर बॉलिंग यूनिट एज वेल। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, तो अब आप अब जो है ये स्टैट्स बिल्कुल ही किसी और तरफ जा सकते हैं अगर पाकिस्तान इंडिया स्टार्ट प्लेइंग, सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, you're right कि बॉलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये एज आपके पास आज हो तो ये स्टैट्स बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। राइट, अच्छा मूविंग ऑन टू द टेस्ट परफॉर्मेंस, आई थिंक वनडे तो एक बड़ा एक ऑलमोस्ट रोजी पिक्चर देती है। टेस्ट परफॉर्मेंस तो मुझे एक सेकंड कंक्लूड करें, सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में they've done the best in terms of all the developed teams, ठीक है, and slightly you can also say West Indies if you want to consider them because the beginning of time से ये data सारी चीजों को लेके जा रहा है, तो I would say they've done considerably well. The only teams they haven't done well against are England, New Zealand, Pakistan, surprisingly. And then South Africa. South Africa, they've been tough. South Africa tough होती है वैसे home में. और एक और चीज बड़ी like they've missed a lot of chances to really better their records in Sri Lanka, I would say, in Zimbabwe for sure, and Bangladesh as well, because Bangladesh में भी वो neck and neck चल रहा है, यानी कि that should have been 100%. I don't think you don't go to Bangladesh and draw series. Yeah, and like with all due respect. You're right. I agree. Yeah, I agree. So I think to conclude, they've done parts of it are very surprising. So they've done against Australia and West Indies, which is very impressive. And then others are not so much. So let's look at the tests now. और I will be surprised. वैसे एक बात है कि West Indies का I will be surprised कि इनकी जो stats हैं, how does these stats improve after the late 80s and 90s era? Right? Because West Indies was a very tough team to beat at home in different team, different team altogether before 93-94, right? Right. So वो obviously वो चलो वो फिर हम एक पॉइंट पे deeper dive को सेपरेटली जरा स्लाइस एंड डाइस करके देखेंगे हर टीम को, तो फिर उसमें हम we can break it down between different eras and see कि किस तरफ डेटा ट्रेंड कर रहा है last 10 years में, last 5 years में. But yeah, moving on to the test performance, I would say that's probably a more clearer, I would say, assessment, क्योंकि इसमें आप कह सकते हो कि यार they haven't done really well at all. क्योंकि India's win percentage away is 24%. They've drawn 18% of the time and they've lost 58% of their bilateral tours away. अब इनमें देखा जाए कि सबसे worst जगहें कौन सी रही हैं उनके लिए. तो Zaib, before we actually jump into के सबसे worst कौन सी रही हैं, and I know हम बाकी teams को बाद में देखेंगे, but because you've looked at this data much deeper, what do you think? How does this look against the other teams? Very high level. Very good question. 18% और ये जो numbers आप बता रहे हो, ये किस तरह के? Are they good or they bad? हाँ, exactly. ये अभी हम इस पे सिर्फ डिस्कस करें. एंड में I have a slide which actually compares, basically rank करेगा in सब teams को one day और test के अंदर, and then you will see. But as far as I remember, I think they were probably right in the middle. Okay, interesting. And Pakistan is also probably right in the middle, but that's for other discussion. आगे बढ़ते रहेंगे, you will see कि comparatively किस तरह से ये चीज़ unwind करती है, and then you'll see कि end में जाके rankings क्या बनती है इन sites की. तो as I said, I mean, test के अंदर it's a different ball game altogether. 5 days competitive cricket. You need to have your batting lineup functioning at least 1.5 innings, right, and your bowling lineup functioning for the 20 wickets that they need to pick up for sure. Because there's no way you can win a test match without winning 20 wickets. So picking up piece wickets. So obviously पे उसके बाद जो हमने बात कर रहे थे bowling attack की weakness, that kind of shows here, क्योंकि one day में you can probably get by using a mediocre bowling attack and a really good batting attack. You can almost like invite other teams to score how many runs they want to score, and then you have a very good batting lineup to chase those runs, which they have done. So
but in the test, it's a different ball game altogether. As you can see, England may they've like their loss ratio is like 78%, so it's pretty bad. They're pretty much down and out in every country except West Indies and Bangladesh and Sri Lanka for that matter. Yeah. So Pakistan, I was kind of surprised that their draw ratio is higher, because I would have thought that Pakistan, if they're touring away to Pakistan are expecting to win. But their loss ratio is just 43%. That shows that either they were kind of winning here once or twice here and there. 14% win ratio in Pakistan. But I think also इसलिए भी कि यहाँ पे मैचेस डिसाइड इतनी आराम से नहीं होते हैं इंडोर पार्क में जब आप खेल रहे होते हैं तो जनरल टेंडेंसी गेम्स की होती है कि वो ड्रॉ ही होंगे अनलेस यू आर प्लेइंग इन सर्टेन लोकेशंस वहां पे जरा ज्यादा डिसाइसिव मैचेस होते हैं जैसे आप कराची लाहौर में खेल रहे हो तो वो ज्यादा ड्रॉ में एंड होते हैं पिंडी वगैरह में डिसीजन आ जाता है और रिजल्ट्स आते हैं हरी हरी विकेटें होती हैं अगर बारिश ना हो रही हो तो हां एग्जैक्टली तो आई एम सरप्राइज्ड टू सी द बार ऑफ साउथ अफ्रीका मैं वो देख के मैं थोड़ा सा आई मीन their loss ratio in South Africa is 86%. वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है and I'm sure पाकिस्तान का भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा against South Africa क्योंकि we've not done well against them historically. अच्छा अब एक क्वेश्चन है Zaib, अब you are telling us percentage of 87% of loss ratio, so let me ask you this, how many bilateral games have India played against South Africa altogether? अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है. If you just give me 1 second, I can pull it up for you guys. वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर आपने 3 गेम्स खेले हैं और 2 गेम्स उसमें से हार गए हो, that means you have a 75% loss ratio, right? That doesn't, I mean that percentage doesn't mean anything to me, right? 3 games के. अच्छा you played 50 games and you have lost 45 of them, then that makes more of a 87% sense to me. Right. So South Africa के साथ इंडिया की जो bilateral test series रही हैं, if I have it right with me here. South Africa. All right. So South Africa के साथ they have played. Let me just move this. They have about, how many is this? 7 tours in total. 7 टूर्स हैं. अच्छा इसमें टेस्ट मैचेस में काउंट नहीं कर रहा, मैं टूर्स के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, ठीक है. तो या इफ एक्चुअली दैट मींस 7 गेम्स. तो 7 टेस्ट मैचेस में दे हैव लॉस्ट 6 and drawn 1. Wow. They haven't won anything. Wow. In South Africa. Wow. Recent Indian team ने भी नहीं जीते. That's surprising. South Africa is the only place that they haven't won yet, by the way. India has won in all of the countries. कहीं ना कहीं जाके सीरीज जीती है. उन्होंने टेस्ट मैचेस जीतने की बात नहीं कर रहा मैं, सीरीज जीतने की बात कर रहा हूँ. हर कंट्री में कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने सीरीज विन करी है, but South Africa is the only place they haven't won a series. Okay, let me clarify, these bar that shows these are series wins or these are matches win? Series wins. Oh, interesting. Okay. अच्छा मैं ये मैचेस समझ रहा था. I'm sorry. I thought these bar represent how many games you have played in other countries and the win ratio by the game, not the series. Actually, you're right. Yes. I stand corrected. That's actually matches. हाँ मैं तेरा ऊपर लेबल में मैचेस लिखा हुआ था. हाँ मैचेस है. ये सीरीज नहीं है, बट लेकिन जो इनका कॉमन पॉइंट है वो बेसिकली यही है कि इन्होंने जो टूर करे थे तो वहां पर कितने सीरीज यानी कितने गेम्स खेले उन्होंने. Interesting. Okay. So that's kind of interesting. And as I mentioned, one day is a different ball game, or test matches का एक फिर अलग ही game होता है. So that kind of shows that they haven't really done well in and Asian teams, normally haven't really shown outside of Asia, if you like, right? So वही West Indies और Australia जिसके against उन्होंने ODI में they done significantly well. Test matches में आके it's not as great basically. No. West Indies actually is not that bad, and I'm kind of surprised कि क्योंकि ये बहुत पुराना database में है, so it means they've done well recently. West Indies के total 12 टेस्ट हैं, उसमें से 7 हारे हैं और 5 जीते हैं. So ठीक है. It's not bad. It's not bad at all. और while we are at it, ऑस्ट्रेलिया के 12 टेस्ट मैचेस वहाँ खेले, 8 हारे, 3 ड्रॉ, 1 जीते.
So winning in West Indies for that ratio is actually, I would give that a win if these matches were win pre-90 era. Yeah. Yeah, for sure. Okay, so that was India. Anything else you guys want to add? And before we move on to the next one? Yeah, the only thing I'd like to add is कि इसका मतलब है कि इंडिया की mostly जो achievements हैं वो recent हैं. उसके बावजूद you actually see that they're not a great touring side except for their recent past. No, actually that's very interesting क्योंकि अभी मैं आशीष नेहरा का एक इंटरव्यू आ रहा था तो उसने भी बयान दिया. उसने बोला कि पता नहीं आशीष नेहरा था या आई रेड इट समवेयर एल्स के कंपेयर कर रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलियन जो ईरा था स्टीव वॉश एंड रिकी पॉन्टिंग का वर्सेस इंडियन ईरा ऑफ MS धोनी एंड विराट कोहली. तो उस पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात एक इंडियन ही प्लेयर ने कही थी. आई थिंक दैट वाज आशीष नेहरा बट आई माइट बी रॉन्ग. उसने बोला था कि दे कांट बी कंपेयर्ड बिकॉज दैट ऑस्ट्रेलियन टीम हैज वन ICC चैंपियनशिप्स लाइक 3 वर्ल्ड कप्स या 5 वर्ल्ड कप जितने भी उनके यानी कि 3 वर्ल्ड कप्स ऑन द ट्रॉट उन्होंने जीते हैं. पॉन्टिंग गिलक्रिस्ट मैकग्राव वाली जैसे. एग्जैक्टली वो वाले एरा जो था. तो इंडिया दे आर अ फैंटास्टिक साइड, दे आर अ वेरी गुड साइड. They have, probably the best players in the world right now. But if they don't really put it up in terms of like wins abroad, ICC championship wins, they're never going to be considered, in my opinion, the best sides, one of the best sides ever. जिस तरह ऑस्ट्रेलिया कंसिडर की जाती है, जिस तरह से वेस्ट इंडीज की जाती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज 2 वर्ल्ड कप जीते थे अपने पीक पे. ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ल्ड कप जीते अपने पीक पे. India has just won 1 World Cup, and they were not even at that peak. At their peak. 2 World Cup, right? नहीं peak की बात कर. Back to back, same team की बात हो रही है ना. मैं peak की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपने peak में उन्होंने 1 World Cup जीता है. अगर वो भी मैं बोलूँ कि peak, that's also debatable. That was not their peak. Their peak is now. Actually, their peak started after the 2011 World Cup win. उससे पहले वो कोई वर्ल्ड बीटर्स नहीं थे कि जिसमें expected नहीं था कि they're going to win the World Cup. They were playing at home, obviously. They were expected to do well, but कोई ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया या बाकी सब चीज़ें टीम भी बिल्कुल बेकार है और इंडिया सबसे बेस्ट टीम है, जो कि वाज द केस फॉर 2003, 2007, 99 जिसमें एक्सपेक्टेड था ऑस्ट्रेलिया विल ईदर बी इन द फाइनल्स और विन द वर्ल्ड कप. दूसरी बात ये कि इंडिया का अगर आप नोट करो दे डू हैव इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, राइट? Yeah. वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पे बहुत ज्यादा था, लेकिन अगर एज अ टीम परफॉर्मेंस देखी जाए तो देन वी हैव द नंबर्स राइट इन फ्रंट ऑफ us. I think that was spot on from Ashish Nehra, whoever that was, but that was spot on for them to be considered a great team. They have to do much better than these numbers reflect. Obviously, it's going to take a lot of time before the tides changes और ये numbers थोड़े से better हो. Obviously. और दूसरा ये कि वैसे भी ब्रांड वैल्यू बहुत है, वाइब बहुत है, वेट बहुत ज्यादा है, तो इंडिया की सक्सेस जो है वो मल्टीप्लाई होती है बहुत ज्यादा. ठीक है. उनके स्टार्स जो हैं वो they look bigger and better than our players. Which is why I was surprised कि जब वो जो पाकिस्तान वाली सीरीज की मैं बात कर रहा था start of the episode पे, if that was India winning away in Australia, we would have heard, like we've never heard the last about it. Like हर वक्त उसके बारे में ये Star Sports पे उसकी highlights आ रही होती. तो I think we've kind of also like didn't play that part really well. अगर उसको market करते, that was a huge win in all honesty. Like एक top team थी, the team that actually eventually won the World Cup, Australian team, वाली team थी वो. To go into their backyard and beat them fair and square without like कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने रेस्ट करी थी टीम और हल्की टीम खिलाई थी और हम थोड़ी सी भारी टीम गई थी या whatever. So anyway, that I agree कि media and their brand value kind of plays a huge role in their achievements as well. All right, so that takes care of India. Other teams, I'm pretty sure that we're not going to have as long as a discussion, but I think बड़ा interesting to note होगा कि Asian teams पे बहुत ज़्यादा criticism होता है कि they're not really good, playing away from home, and it's very easily forgotten कि teams like England that we're going to discuss next, they haven't done really well either, right? So their ODI performances, as you can see, England ODI bilateral wins away from England, it's just 38%. They've lost 44% of the time. Abandoned वगैरह हुए थे 4% games. Let's just ignore that. But they've drawn 14%. तो अगर उनका win और draw percent लगाए तो it's close to half and half. तो
it's decent, but it's also not really like अगर India से compare करूँ तो it's pretty much at par with India. And we've criticized India as much as we have in ODIs or their their matches abroad. So it's not a huge departure from that. What do you guys think? Again, going back to the fact that very recently, in the past few years, like after the 2010 era, उसमें इंग्लैंड की टीम वनडे के अंदर थोड़ी स्ट्रांग होनी शुरू हुई है. उससे पहले आई नेवर कंसिडर्ड, आई मीन इन द 90s एक टाइम आया था जब गूच के टाइम पे, इयन बॉथम के टाइम पे थोड़ा सा था, लेकिन इंग्लैंड वाज नेवर ए प्रॉपर वनडे विनिंग टीम. मैंने आज कभी नहीं सुना कि इंग्लैंड हैज बीन अ वेरी डेंजरस साइड कि उनको अनबीटेबल और एनीथिंग. वो एरा इंग्लैंड के टाइम पे कभी नहीं आया था, एक्सेप्ट फॉर द 92 वर्ल्ड कप के टाइम पे दे वर हॉट फेवरेट्स व्हिच वी ऑल नो, राइट. लेकिन उसके अलावा मैंने अपनी कभी नहीं सुना कि इंग्लैंड को हराना बड़ा मुश्किल है. और एक्चुअली आपने 2010 की बात करी, आई वुड इवन गो एज फर्दर एज से कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद दे एक्चुअली been ODIs के अंदर सबसे बेहतर, like actually the last 5 years, that's all. I don't remember an era. अभी era है उनका because they have a very strong team, but they haven't been really like world beaters as such. Compared to like Australia and like I said, maybe even India, they're not probably at par with India. Even at their best right now, they're at par with India, who are not at their best. So I'm not surprised about England's stats right now. This was expected probably. उनकी rest of the world performance. I would actually say कि actually ये India के मुकाबले में from a perception standpoint, it's a better record basically away. क्योंकि like Sahir said, they were never perceived as a very threatening team in the ODIs. Right. And I'm surprised कि पाकिस्तान में आके उन्होंने win draw ratio बड़ा high रखा हुआ है अपना. हाँ, तो like उनका like I said, win ratio is 40% and their draw ratio is 60%. So they've like drawn a bunch of games against Pakistan, or they've lost a few as well. So the worst tours, I would say, very expectantly, India, like England has never toured, like any quote unquote Western team hasn't really done well in India, apart from probably Australia. Though, as you can see, unka record in India is abysmal. West Indies, for that matter, is also like they're still like, even after all, the downfall West Indian cricket has gone through, they're still edging them at home. West Indies. So you can, or in England or West Indies ki history hai, like proper history hai. Like they've played a lot of games against one another. So I think their best record is against New Zealand, playing away, and then followed by Pakistan. Well, Zimbabwe bhi hai, but if you major teams take the top tier teams ko lete hain, तो it's been New Zealand followed by Pakistan and then West Indies and Australia, and surprisingly India में काफी इनको लगता है tough time मिला. अच्छा, इसमें if you compare the bars and the loss percentage, right, they have lost more games in Sri Lanka compared to Pakistan. Yep. और इसका मैं एक इंटरेस्टिंग आपको थ्योरी में अभी देख के मुझे दिमाग में आया कि if you see न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, फरूख ने बात करी why they've done well over there, because those are two teams heavily reliant on fast bowlers. So that kind of plays into this idea that maybe English teams have done well against the pacers, and they've done awful against spinners, as reflected by the fact that they've done really poorly in India and Sri Lanka, who rely heavily on their spinners. Or medium pacers जो कि they don't just give it away, थोड़ा mix and match करते हैं. Exactly. So it's hard to score against. But I'm pretty sure कि toes के इंडिया और श्रीलंका के toes अगर ये इनके उठा के देखें तो ऐसा ही हुआ, हरभजन ने कुछ 8 विकेटें ली होंगी. And I can almost bet कि batting had to play a huge role in this, कि जो पाकिस्तान की wins हैं इसमें bowling ने पाकिस्तान को बहुत help किया होगा, and I can almost bet that on the other side India and Sri Lanka probably also did well with their bat, जिसकी वजह से ये record इतना अच्छा. Right. And then again, consistently against South Africa, I mean, they haven't done really well. They haven't done well at all as well. Though South Africa, abhi so far going through what we have seen, is pretty leading tough the charts. Leading the charts for sure. My perception has also changed slightly. I used to think Australia, but Australia to khair hai hi hai, but South Africa is leading the charts, bhai. And just to give you like just a sneak preview to the eventual results, you're on the right path. I'll just say that. Yeah. तो उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस देखते हैं.
test performance hasn't been also really standout-ish, if you like, but it hasn't been bad as well. The loss percentage is 41% and their winning percentage is 39% and drawn 20% of the time. So अगर आप drawn और win percentage को combine करें तो that's more than half, which is a very decent win record away from home for England. More about 50-50 पूरा लग रहा है. हाँ, सही. तो इसमें अगर आप देखते हैं तो you will see कि they've done well, you know, in terms of like draws in South Africa and New Zealand, which is their, you know, one place is there. And another interesting thing, they haven't won a test series in Zimbabwe. How many series are there? That's very interesting. They haven't played played a lot of them, maybe a few. So that's probably a reason why. But still, any English touring side to Zimbabwe is expected to win, which they haven't. So it, you know, it's a अजीब सा record है because they haven't won a test series in Zimbabwe. Against India. I think Zimbabwe in their own way are coming out as a very strong host as well. They don't give it away that easily. They don't, especially the 90s or early 2000s वाली team थी. That was a very decent team. I wouldn't say. Heat Streak और वो जो सारे थे. Flower Brothers. That was a good team. That was a very good team. तो वो एक टीम थी कि यार आपको एक सरप्राइज पैकेज दे सकती थी, स्पेशली इन द लॉन्गर फॉर्मेट, जिसमें अगर आप ज़रा सा भी आपकी कंसंट्रेशन स्लिप होती है, सो इट्स अ पोटेंशियल बनाना स्किन, राइट? जिम्बाब्वे उस ज़माने में कि यू कैन स्लिप ईजली एंड देन दे कैन ईजली, you know, beat you on their day. So looking at their like away tours in India and Pakistan, you know, they've drawn a lot of like games against these two, which is interesting. Especially I think जो draws England के India में आए थे, I think वो बहुत recent है. I remember Alistair Cook के under they won the series a few years back when Alistair Cook was the captain. जिसमें I think he scored a double hundred or something like that. और that was quite a win for England कि उन्होंने जाके 2-1 सीरीज जीती थी in India, which was huge. वैसे उसमें ये बात भी कंसीडर की जाती है कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान की हमारी पिचेस विकेटें इतनी डेड होती हैं कि वो बिल्कुल बैटिंग के लिए वो बॉल, मतलब इट इज मेंट टू हैपन अ ड्रॉ, राइट? हाँ, you're right. वो चीज तो यार लेकिन फिर आप श्रीलंका का रिकॉर्ड देखें तो वो डजंट क्वाइट सजेस्ट के यार वहाँ पर ड्रॉ बारिश की वजह से भी हो सकता है. श्रीलंका इज नोन फॉर, श्रीलंका बारिश बहुत होती है ना. हाँ, तो वो भी एक इनफैक्ट. बट एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने बोला है कि पिचेस की क्वालिटी, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिसमें विन और ड्रॉ और मैचेस हारने का जो रेशियो है उसमें बड़ा एक कंसिडरेबल डिफरेंस है. दैट शोज कि पिच की क्वालिटी ऐसी थी कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड थी. तो दैट काइंड ऑफ गिव्स अस एन आइडिया कि यार ये पिचेस बेसिकली, which is why they've also, like Indian teams and Pakistani teams, they haven't done well in these conditions because ये result oriented pitches हैं. Like you have to be good here to win. You can't like you can't draw if you're average. Especially at home, you can draw when you're average. Chalo. Right. So fair enough. For the test side, we'll give for England we'll give 50-50. हाँ, 50-50, right? तो moving to Australia, this is very interesting. जिसमें मैंने बड़े इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स दिखेंगे आपको यहाँ पर. मेरी आंखें खुल गई, अब तो नींद उड़ गई सारी. मैं कोशिश करिए कि कलर्स की इनकी थीम वैसी रहे तो अच्छा रहे. देसी चूचे वाला आपने येलो यूज किया. हाँ, देसी चूचे वाला एग्जैक्टली. मैं तो बिग बर्ड करने वाला था, लेकिन चलो हम देसी चूचे से भी रह रहे थे. इसमें कोई अगर कमी पेशी रह गई तो बता दीजिएगा खैर भाई. तो एनीवे 19-20 का फर्क लग रहा है. पेशी कमी पेशी रह जाए. तो अच्छा खैर, ऑस्ट्रेलिया का विन परसेंटेज अवे फ्रॉम होम इन ODIs इज 51%. तो दैट ऑलरेडी गिव्स यू एन आइडिया कि दे हैव डन वेल. ठीक है, like they're winning. फिर draws इसमें ऐड कर लें which are 8%, तो उसमें थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आ जाती है. तो 60% अराउंड their away tours ODIs के अंदर सक्सेसफुल होते हैं. Loss percentage is 39, fair, right? क्योंकि Australian teams in the 70s probably not as good as the teams in the 80s and the 90s, and then also teams right now, you know, after 2010, I would say, haven't been the best teams ever. So Australia has lost the most number of games in Pakistan.
Yes, sir. That is correct. The most percentage, yes. Most by percentage they've lost in That's Pakistan. very interesting, I say. Right? वही So, मेरे नजर से फिर उसमें पड़ी है वैसे. so Pakistan mein they've lost more than 60% of the time. They've lost in South Africa more than 50% of the time as well. They've done fairly well in India. They've lost like it's 50-50 in India actually. Like they've won and lost 50% of the time in ODIs. Number of games भी काफी ज्यादा खेले हैं उन्होंने इंडिया में. हाँ तो which I think India में they've toured really well I would say क्योंकि out of the Western teams again तो they've done fairly well क्योंकि I think they've probably played spin most compared to other Western teams they've played spin the most effectively so that kind of shows why they've done well in India. And interestingly, South Africa ने अपनी reputation वैसे maintain किया as a tough host. Yes. Even against Australia. Yes. Yeah. Yep. Or West Indies, man, I was pretty surprised that they haven't really won a lot. They've drawn a lot there. They haven't lost much in West Indies. That kind of shows that वो एक early West Indian side थी 70s or 80s की. They were pretty tough hosts for them as well. उस वक्त हालांकि Australian teams wasn't like the worst team, but that kind of shows tough थी. But West Indies obviously they held their own. ये वो डेनिस लिली और उन लोग का टाइम था ना. अच्छा मैं बड़े इसमें एग्जैक्टली हाँ तो मैं वैसे बड़ा इंट्रीग हुआ इसके ऊपर कि यार जो इंग्लैंड के साथ इनका जो है हालांकि इंग्लैंड में मुझे तो जहाँ तक याद आ रहा है कि बड़ा अगर मैं रीसेंट पास्ट को इग्नोर करूं तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एवरी टाइम ऑस्ट्रेलिया वेंट टू इंग्लैंड दे वन बट ओडीआई में अगर आप देखें बायलैटरल ओडीआई के अंदर दे हैव लॉस्ट मोर इन इंग्लैंड compared to what they've won and drawn, which is interesting. I thought it was kind of a one-way street, but it's probably more competitive. I don't know, but interesting. I think what you're thinking is going toward it's more towards the test side. हाँ वो हम देखेंगे वो भी हम देखेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया के. तो ODI में they've done pretty well, like 100% records in Zimbabwe, Bangladesh, Scotland and Ireland, which is why I was suggesting earlier कि जब Zimbabwe और Bangladesh जा रहे हो, you better win your games because that's one way to maintain your supremacy, right? So, which they've done well compared to some of the other teams that toured these not so difficult places. Moving on to the test performances, 46% of the test they've won away, Australia. 14% draw, so that kind of shades them over 50% overall. अगर मैं इसको success ratio count करूँ, and they've lost 40%, which is okay. I would think. Interestingly, now that I see that the trend in losing in South Africa, right? So they have not lost much test series or games in South Africa. Yes. But they have lost more in Pakistan again. Test series. In both ODI and Test match have lost more games in Pakistan in compared to any other country. Yep, which is very interesting. I thought कि बड़ा which is very interesting. और हमने कभी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो उतना वो नहीं चुना क्योंकि I think वो ओवरशैडो हो जाती है with our performance against them. हाँ, in Australia हम लोग वो ज़्यादा न्यूज़ बनती है कि we do horrible against them. So it overshadows, but it's a very very interesting stat. Zaib, एक question है आपसे. Do you know अगर आपके सामने ये है stats पड़े हुए, how many tours or when was the last tour Australia did in Pakistan? यार पाकिस्तान तो नहीं यानी कि वो UAE वाला होगा like I don't know if you wanna. हाँ ठीक है that's true हाँ मैं तो भूल गया था. हाँ ठीक है you need that or नहीं अब ठीक है याद आ गया. ठीक है sorry. तो इसमें वाला भी इम्पैक्ट है obviously कि I think recent past के अंदर दुबई वगैरह हैज़ बिन रियली स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर अस जिसमें इंग्लैंड भी हारी है ऑस्ट्रेलिया भी हारी है बहुत मरतबा हमसे वहाँ पे टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं तो दैट काइंड ऑफ लाइक गिव्स अस बट स्टिल regardless of the fact home is home और वही हमारा home था उस वक्त तो regardless हमने like we've held our own against Australia coming and playing against us in our home. I think as pointed out earlier they've done pretty well against South Africa. I thought that was really interesting. England may they've lost more than they've won, but they've drawn a healthy amount as well. So that kind of like gives me an indication जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि मुझे तो हमेशा जीतती हुई दिखी है ऑस्ट्रेलियन टीम
So that kind of also puts things into perspective, which is why मैं बात करता हूँ कि यार जो डाटा होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. परसेप्शन एंड डाटा इज कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स. तो जब मैं परसेप्शन लेके पहुंचा हूँ ना यहाँ पर कि यार वो जो आपको एंड में पता लगेगा कि यार पाकिस्तानी टीम कैसी है अवे में और बाकी टीम्स के कंपैरेटिवली, मैं परसेप्शन लेके पहुंचा था कि थकेली. लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो आप देखते हो, डाटा वगैरह देखते हो, तो काइंड ऑफ लाइक पुट्स थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव. कहते हो नहीं यार, एक्चुअली यू नो व्हाट, maybe it's not that bad. But yeah, like they haven't done really well in England as much as I thought they would have. And they've done pretty well in South Africa and New Zealand, of course. New Zealand like तरीके से उनका home ही है, right? Because conditions almost similar, and New Zealand have been really probably the only team that they've not been really tough host to is Australia. Otherwise हर team के साथ वो tough host होता है. न्यूजीलैंड. नहीं, बस इंग्लैंड के साथ ये भी है ना कि when it comes to test matches, right? I mean, South Africa has been playing against England since the 1800s. Right. फिर तो वो भी सीरीज शुरू हुआ 1900s की शुरू के अंदर, फिर वो हर साल खेलते आ रहे हैं. So there are so many one-on-one against each other. कि I mean, you're talking about 200 years of cricket, right? अब इस 200 years के अंदर आप 100 साल लगा लो, England being the top side and 100 साल लगा लो Australia being the top side, then I'm not too surprised about the lost and the win draw percentage being equal at the same time. Right. 39 total tours रहे उनके इंग्लैंड के. हाँ, तो 39 और इतने ही उनके भी रहे होंगे, तो that's a lot of tours. Right. On both sides, right? Right, exactly. मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो है गिनती के हमारे 50 सालों के अंदर कुछ 2 या 3 टूर्स होंगे ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान आने में. 4 होंगे ज्यादा. वही तो, मुझे तो सिर्फ ऑन द टॉप ऑफ माय हेड मुझे 2-3 याद आ रहे हैं, वो भी दुबई वगैरह में खेले थे, वो भी 1-2 बल्कि, एक्चुअली नॉट मोर देन 2. Alright, let's move on to the talk of the town so far. South Africa, जो कि अभी हम लोग कह रहे थे कि बड़े strong performance है in a way. अभी तक हम ये समझ रहे थे कि हमने ये समझा है कि they're a very difficult host. अब देखते हैं कि how do they do against the other teams. अच्छा, अब इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट से. ये आपने उल्टा कर दिया. ये मैं कह रहा हूँ ये टेस्ट कहाँ से पहले आ गया ऊपर. तो चलो ओडीआई से कर लेते हैं. आई थिंक मेरी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई होगी. तो ओडीआई पे अगर आप आ जाओ तो they've won 43% of the time, 18% draws. So again, puts them in a very favorable position. Yeah, before we get into anything, one of the stats that is actually jumping out of this is Pakistan. And I want to talk about it first. हम ओडीआई की बात कर रहे हैं ना? हाँ. नहीं, टेस्ट की नहीं कर रहे हम. नहीं, हम ओडीआई की बात कर रहे हैं. अगर आप ओडीआई में जाओ तो वही चीज पहले आपको नजर आएगी. ओके. चलें ओडीआई पे आ जाएं. तो ओडीआई में उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं, आई थिंक न्यूजीलैंड में दे हैवंट लॉस्ट इन न्यूजीलैंड एट ऑल, सो दैट्स अ वेरी गुड feat for them. West Indies, they've toured really well in against West Indies. Again, इसमें वो weak West Indies side भी हो सकती है, considering the fact that they didn't play against West Indies when they were at their peak, right? Because they were banned, weren't they? हाँ, नहीं खेल रहे थे. So that kind of shows here कि West Indies में done pretty well, क्योंकि 90s के बाद तो उन्होंने शुरू किया है, I think, खेलना. They have not lost in Zimbabwe? Yeah, they haven't. Yeah. Like, तो उसमें क्या surprise है? Oh, they've not lost. Sorry. रोजा लग गया सर मेरे को. हाँ, नहीं, अच्छा. पानी पी लो सर पे, पानी. हाँ, सही है. मैं कह रहा है ये क्या हुआ? मैंने कहा यार ये कौन सी राइवलरी थी जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ कब से. Sorry. अच्छा देव, अच्छा जरा पाकिस्तान पे आ जाओ जरा. हाँ, पाकिस्तान पे बात करें भाई. पाकिस्तान के ऊपर ये जो विन और ड्रॉ के जो बार बिल्कुल हवा पे छू रहा है, so that means they have a very good record in Pakistan. Yes, they have a very good record in Pakistan. Actually, they haven't drawn anything in Pakistan, as you can see. Both the percentage values are the same, so they've won. नहीं, so I mean win draw percentage जो आपका blue bar है ODI के अंदर वो ऊपर है win से. पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? हाँ, South Africa versus Pakistan and ODI, right? हाँ, तो वो 67 ही चल रहा है मुझे तो, मेरे सामने तो एक साथ ही है. It's like neck to neck. It's not above the wins.
But regardless of the fact, I think they've done really well in Pakistan. Is what the point I is. think generally we've never done great against South Africa overall. ये तो until recently हमने अब आके इनको हराना शुरू किया, but एक जमाना था पाकिस्तान हमेशा हारता ही था. साउथ अफ्रीका से. हाँ, और इवन हमारी बेहतर टीम्स भी तो थी, फॉर सम रीजन 96 में उसके बाद हमेशा से हम हारते ही आए हैं फॉर सम रीजन. 92 के वर्ल्ड कप में भी तो हारे थे हम साउथ अफ्रीका से, क्या जीते थे? वो जीते थे वाला मैच जो हारे थे. नहीं हार गए थे ना. पाकिस्तान तो एक ही गेम जीता था, वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीता था. वो जॉन्टी रोड वाला हारे थे हम. जॉन्टी रोड्स वाला गेम हम हारे थे, राइट? आई डोंट रिमेंबर. इंग्लैंड के साथ बारिश हो गई थी, न्यूजीलैंड से हम जीते थे, हाँ ये साउथ अफ्रीका से हार गए थे हम लोग शायद. हाँ एग्जैक्टली. एनीवे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, तो बारिश हुई थी. आई थिंक बारिश भी हुई थी. तो इसमें अगर आप देखें, दे हैव आल्सो नॉट डन वेल in they've also like done well actually in Australia because they've drawn more than that they've lost. So drawn or win percentage बड़ा उनका high है. It's more than 50%, almost actually 50%. Drawn or win percentage 55% है. So they've done decently in Australia. They've done pretty well in Pakistan. They have lost a lot of games in India for some reason. I don't know why. क्या इसका रीज़न ये है कि वो स्पिन अच्छा नहीं खेलते और हम फास्ट बॉलर्स रिलायंट थे, तो हम फास्ट बॉलर्स से ज़्यादा अच्छा खेल सकते थे वो लोग. Yeah, what do you think is the reason why they're doing well in India and not in Pakistan? I think batting. Actually, not doing well in Pakistan, vice versa, sorry. क्या I think my personal thing is कि now question comes to again. अभी हम percentages count कर रहे हैं, right? So the point being is कि मैं हमेशा वही कहता हूँ, percentage is not the right way of comparing these. It's because I mean the number you're looking at कि they have a higher bar of lost, but हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ 3 games खेले हों, 2 हार गए हों और एक जीत गए हों, तो फिर win loss percentage is very high, 75% loss and 25% win, right? Versus if they have played another country 30 games, right, in which they have lost 20 games and 10 games, right? So then the win percentage or loss percentage comes to 60 to 40, right? हाँ, लेकिन win percentage इसलिए मैं समझता हूँ कि एक reasonable assessment है, क्योंकि फिर you can't expect all of these teams to play the same games. तो हम percentage पे ही बात कर सकते हैं कि यार how many of the times that they've won. Like ये एक तरीके से. My question to you is how many tours have they done for India? मैं आपको बताता हूँ. इंडिया के खिलाफ इन्होंने किया है. Okay, they've had 6 tours to India and Pakistan में they have 2. वो एक बात है ना. हाँ, तो वो ठीक है. I understand your point, लेकिन मैं like I couldn't put that into a very comparable thing. तो इस वजह से I think percentages मैंने use किए हैं. But you're right कि obviously skewness होती है कि कितनी मरतबा कितनी frequently वहाँ पर गए. So out of the 6 tours that they've done to India, they've lost 4 and just one. And Pakistan में they've won both of the away tours that they've done. ODIs की. वो तो मुझे याद है. I think it has to do with our bowling versus our batting versus India's batting. Right, exactly. क्योंकि वो एक तरीके से पेट पे बेहतर हुआ है. चलो, तो अब इनके टेस्ट मैचेस में आते हैं. टेस्ट मैचेस they've done really well. 55% of away test matches that they've won, 11% draw, so that puts them in a very comfortable position, over 60% win ratio or success ratio away. Lost 34% of the time, and they won all their games against Pakistan. हाँ, वही मैं देख रहा हूँ. इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ हारे नहीं है टेस्ट मैच. And again, going back to the fact, again in test match, India के अगेंस्ट लोग फिर हारे. पाकिस्तान में मैं बता रहा था कि आपको कितने 3 टूर्स कर चुके हैं. एक टेस्ट मैच एक टूर हारे, 2 जीते हैं. इंडिया में इनके टूर्स हुए 7, तो 3 versus 7. खैर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं, बट स्टिल पाकिस्तान में they've done like surprisingly well. हाँ, तो यही वो स्टार्ट था जो कि उछल के आ रहा था बाहर के यार. मतलब पाकिस्तान ने कभी इनको फंसाया ही नहीं. होम में नहीं फंसाया उनको. आई थिंक अगर अब हो तो आई थिंक होम में फंसा सकते हैं. अब शायद हम फंसा सकते हैं दुबई में. दुबई में नहीं, पाकिस्तान में फंसा. हमने दुबई में इनके साथ कब खेला? दुबई में खेला था हमने? नहीं खेला यार हमने इनके साथ अवे टूर्स. हाँ, इनको फंसा लेते कहीं ना कहीं यार. एग्जैक्टली. तो वो हमने इतना नहीं खेला दुबई में इनके साथ कभी. पाकिस्तान में ही खेला. आई थिंक 2005 या 6 की सीरीज थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, जिसमें साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई थी.
या दूसरा मुझे एक some point maybe I think we should also compare कि पाकिस्तान में कितना बेहतर किया है versus दुबई में कितना बेहतर किया है. मुझे क्यों I think ये भी थोड़ा perception और stats को हमें compare करना पड़ेगा. मुझे लगता है कि शायद दुबई में we've done better as a host. Probably, हाँ, yeah. I think वो एक perception है. I'm sure. So we can definitely look at that later. चलो नेक्स्ट आ जाए. मुझे हरा पाकिस्तान नजर आ रहा है. चलो भाई, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉक ऑफ द टाउन, जिस चीज़ के लिए हमने पूरा बिल्डअप किया है, पाकिस्तान. और इसके मुझे इसके पाई चार्ट्स और बार चार्ट्स बड़े अच्छे खूबसूरत भी लग रहे हैं बहुत. चलो अभी ODI परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं भाई. पाकिस्तान 46% ऑफ द टाइम they've won away in ODIs, they've lost 46% of the time. तो ये ऑलमोस्ट वैसे इंडिया के जैसा ही है. इंडिया के जैसा ही है. सो यार लेकिन ये अबैंडन गेम्स का क्या सीन है? ये हमारे इतने अबैंडन क्यों है गेम्स? ये जो हमने जो इंग्लैंड आयरलैंड वगैरह के साथ, स्कॉटलैंड के साथ 2-3 मैचेस थे ये, वो मैं देखा था. वो इस वजह से मैं डाला हुआ है. अबैंडन मतलब कि वो हुआ नहीं, बारिश हो गई, बस खत्म हो गया. लेकिन वो ज्यादातर अबैंडन वो है कि जो हमने एक दफा देयर वाज अ टेस्ट मैच. नहीं, ODI है ना, ये तो ODI देखा. ठीक है, सॉरी. तो ODI में दूसरा इशू था. we've done pretty well in India. More than 60% of the time our win ratio in ODIs, which is really good, क्योंकि हम अवे जाके इंडिया में वैसे बहुत जीते हैं ODIs की. मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आई थिंक अंडर इंजमाम भी हम जीते हैं, अंडर मिसबाह भी हम जीते हैं, अंडर इमरान खान भी हम जीते हैं. आई थिंक वसीम अकरम never toured away in ODIs, did we? 1999 का जो हमने किया था, जो हमने वो टेस्ट था ना, वो तो कोई ODI नहीं था उसके अंदर. ODI थी लेकिन वो ट्राई सीरीज थी श्रीलंका के साथ, तो वो मैंने काउंट नहीं करी. आई थिंक वी प्रॉब्ली वन दैट एज वेल, क्योंकि उस वक्त हम हर चीज जीत रहे थे इंडिया में. यार वैसे very interestingly, so अब आप अगर इसको राउंड अप करें, and it's a separate stat basically, but if you see India away in Pakistan, so that was almost 50-50, and now we're looking at Pakistan away in India, and it's superior, it's better. Yes. So for the record, we've done better. Yes, 60% of the time. So they've done, like, we won a lot of games over there in India. I'm surprised we've lost a lot of ODIs in England. That was my disappointment. Yeah, England mein to I thought we would do well. And also drawn a few ODIs in Bangladesh, which I thought again wasted opportunity for us. तो वो उसमें दूसरी चीजें आ जाएंगी. वैसे इसको आपको ना नॉर्मलाइज कर देना चाहिए था. वो हमने उनको टेस्ट स्टेटस दिलाने के लिए बड़ी कुर्बानी that should have been excluded from this data. वो तो ठीक है. वैसे हमारा सबसे worst West Indies, actually we did pretty good in West Indies. Yes, that was also my area जिसमें मैं देखा था कि यार West Indies में historically we've had good battles. I think Viv Richards का भी बयान है कि जो touring sides आती थी West Indies when West Indies were at their peak, they were mostly wary of the Pakistani team, because क्योंकि वो उनके players at the time and the leadership and everything else was they've always given West Indies a very very tough time at home, like West Indies के home में. So that kind of shows here that they've been neck and neck against West Indies. They've lost very few ODIs in West Indies. The worst place for Pakistan to travel surprisingly in ODIs is New Zealand and South Africa and England. Australia तो है ही, लेकिन Australia में भी Australia में we've won as well, which is why ये पूरा गेम ही ऑस्ट्रेलिया की विन से स्टार्ट हुआ था जो मैं देखी थी सीरीज. तो बट लेकिन अगर उसमें देखा जाए कि एक तरीके से क्लियर मार्जिन से जो हम हारे हैं वो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में हारे हैं. लाइक बहुत कम विन्स है हमारी वहाँ पर ODI विन्स. चलो टेस्ट पे आ जाओ आप. हाँ, टेस्ट पे आ जाते हैं. ये थोड़ा सा disappointing है. 29% of Pakistan wins or tours in has 29% of them have resulted in wins, 42% losses and 29% drawn. Like that's where it becomes interesting in my opinion. कि 29% draw or 29% win मिलाकर is better than India. हाँ, मिलाकर it becomes a better position. कि India का, correct me if I'm wrong, India का win percentage outside was 15% or 14%? 24 I think. हाँ, ऐसा कुछ था. टीम्स के अंदर था. उनके टेस्ट मैचेस के अंदर. टेस्ट मैचेस में उनका विन परसेंट आई थिंक वाज 24%. 24%. हाँ, he's right. 24%. ठीक है. Yeah.
तो 24% था, लेकिन पाकिस्तान का 29 और ड्रॉ मिला के तो एक बड़ा हेल्दी परसेंटेज बन जाता है. एंड this is where you see we haven't lost a test series in Bangladesh. Ireland, of course, that's a good thing. South We have Africa done again. pretty good in New Zealand, huh? Yes, that's where things become really interesting. We haven't lost test series as much in New Zealand. Done very well in England as well, if you see. Like draw हम लोग वहाँ पर ज़्यादा करते हैं. इंडिया में भी हम draw करते हैं, which is okay. I think कि अवे जा रहे हैं वहाँ पर, बड़ा एक hostile environment होता है test matches का in India. So we've done well in India, we've done well in West Indies, we've done well in England, we've done So well we in have New never Zealand. won a test match in South Africa and Australia. What? We have never won a test match in South Africa and Australia. No, we have won a test series in. नहीं, मैं देख रहा हूँ टेस्ट मैच देख रहा हूँ. लेकिन इसमें नहीं नजर आ रहा. साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर वी हैव नॉट वन अ टेस्ट मैच. No. टेस्ट सीरीज हमने साउथ अफ्रीका में जीती है. Oh no, sorry, so draw. Yeah, you're right. ड्रॉ किया. ड्रॉ किया ना, जीते नहीं. Yes, you're right. आई थिंक ये थोड़ा सा वैसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट है कि अगर हमारा अवे रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है तो हमें एटलीस्ट कुछ मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जीतने चाहिए थे. वैसे ओवरऑल इन जनरल देखा जाए हर टीम की टूरिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका जो है, दोस नंबर्स आर वेरी सिमिलर, राइट? वेदर इट्स पाकिस्तान, India, England, right? So is this the reason that both South Africa and Australia have similar wickets, or their mindset of playing against countries from other parts are similar to win strategy is? I don't know. Farrukh, तुम बताओ. यार आई थिंक पिचेस मुश्किल हैं यार वहाँ पे. हमेशा मसला होता है टूरिंग साइड्स को. I know South Africa does not have a very bouncy wicket the way Australia has, right? So maybe they have the more swingy wicket in comparison to other ones. यार पता नहीं मुझे. बट उनका बॉलिंग लाइनअप हमेशा से बड़ा स्ट्रांग रहा है. बहुत स्ट्रांग रहा है. बैटिंग उनकी क्योंकि वो लोकल विकेट्स हैं तो वो स्विंग को मैनेज कर लेते हैं वहाँ पे. तो it's always been difficult in South Africa. This is very surprising, right? कि हम लोग कभी South Africa, I was कुछ हमने जैसे ज़ेब बता रहे हैं कि इसने ये शुरुआत ही की थी YouTube गेम्स देख के, YouTube में मैचेस देख के. तो YouTube में जो मैं मैचेस देखता हूँ तो मैं वो रज़ाक की इनिंग्स देखता हूँ जो उसने साउथ अफ्रीका गेम्स मारी थी, लेकिन नॉट इन साउथ अफ्रीका, लेकिन वो सब न्यूट्रल वेन्यूज पे थी. और वो जिन बॉलरों को उसने मारी थी वो भी आप जरा देखिएगा कभी कौन थे. तो लैंगरफेल्ड और पता नहीं कौन. तो we haven't won a series in South Africa is probably the only place we haven't won a series. Australia, of course. We haven't won a series. Otherwise, we've won series in England, West Indies, India, Bangladesh, Sri Lanka, everywhere. So I think Pakistan team के लिए if they focus on these areas, I think South Africa probably the easier of the two. कि वहाँ जाके जीता जा सकता है. And if speaking of highlights, मैंने अभी recently एक और highlight देखी थी पाकिस्तान की in South Africa. I think I don't know if we lost that game or not, but जिसमें मैं उसकी परफॉर्मेंस देखा था, क्या नाम है उसका, मोहम्मद आसिफ की. तो मोहम्मद आसिफ picked up a bunch of wickets over there, and I think we've been in positions in both Australia and South Africa where we were in winning positions. 2010 के अंदर जो बात कर रहा था फरूक की, जो कामरान अकमल की जो बात करी थी, जो हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी, we were in winning positions in at least 2 test matches out of the 3. Like उनमें से एक तो था कि 99% जीतना था हमें, वो हम हार गए. I think सिडनी के अंदर जो हुआ था वो, जिसमें उनकी टीम पूरी, यानी कि हमारा आई डोंट नो, उनकी टीम बहुत हल्के आउट हो गई थी. हमने लीड भी लंबी बना ली थी, फिर भी पता नहीं क्या हुआ था. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई रिमेंबर दिस के हमने उनको घेर लिया था और हम जीतने वाले थे बस वो उस टीम के साथ 2010 के अंदर. सिमिलरली 96 के अंदर होबार्ट, इफ यू गाइस रिमेंबर द ऑफुल टेस्ट मैच, वो तो खैर जो जस्टिन लैंगर रिफ्यूज टू वॉक. आई थिंक दैट वाज अनदर प्लेस कि अगर वो जस्टिन लैंगर वॉक करता तो वो हम जीत जाते वो मैच आराम से. एंड वी वर इन वेरी क्लोज पोजीशंस टू विन गेम्स इन ऑस्ट्रेलिया. तो
ये सब चीज़ें we've come close in Australia and South Africa both, लेकिन we haven't really finished the job. So I think कि अगर against those tough teams, if we could do that with the current teams that they have right now, I think we can probably do a little better. And I think to begin with, अगर हम इंग्लैंड में जीत सकते हैं तो भाई हम at least साउथ अफ्रीका में तो जीत ही सकते हैं. हाँ, exactly. So that kind of ties it all together. So if you have nothing to add here, we can move on to the final side, which kind of brings it up in terms of rankings. मुझे बड़ी कलरफुल लग रही है रैंकिंग्स एंड वो. हाँ, तो ODI रैंकिंग्स ऐसे दिख रही है हमें कि अगर हम सिर्फ विन परसेंटेजेस या विन्स की बात करें अवे तो बेस्ट टीम इज साउथ अफ्रीका नंबर 1, नंबर 2 इज ऑस्ट्रेलिया. एज हमने प्रेडिक्ट कर लिया था स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट के अंदर कि जो हम देखते जा रहे थे सबके रिजल्ट्स. 3 पे पाकिस्तान आती है इन ODIs, 4 पे इंडिया एंड लास्ट इज इंग्लैंड. दे हैव डन द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ODI ट्रैवल्स. अगर इसमें विन्स और ड्रॉ ऐड कर लें तो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान काइंड ऑफ शेड्स टुवर्ड्स द फिफ्थ. लेकिन वैसे फिफ्थ और फोर्थ ज्यादा ODIs में ड्रॉ जो है वो आई थिंक इतना मैटर नहीं करता. हाँ, इतना नहीं करता, लेकिन वो करता है इस तरीके से कि अगर 5 मैचेस की सीरीज है, 2-2 हो गई, एक मैच बारिश हो गई तो ठीक है, हो जाता है. लाइक इट काइंड ऑफ लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक. बट मैं इस प्रिंसिपल को लेकर आगे चला था कि ड्रॉइंग अवे वेदर ODI और टेस्ट इज आई थिंक अ वेरी गुड रिजल्ट. अगर आप 2-2 ड्रॉ कर आ रहे हो, 1-1 ड्रॉ कर आ रहे हो, कुछ भी करके आ रहे हो, लेकिन अवे जाकर आप हार नहीं रहे, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन. बट या एज इवन अगर विन और ड्रॉ परसेंटेज अगर देखा है तो जो टॉप 2 हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही रहते हैं. फिर वो जो 3, 4, 5 पोजिशन थोड़ी सी चेंज होती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं वनडे के अंदर. तो पाकिस्तान ओवरऑल आई थिंक वनडे ट्रैवल्स विन परसेंटेज के हिसाब से they've done decent. They've done I think we're somewhere in the middle वैसे देखा जाए somewhere in the middle. हाँ, somewhere in the middle, यानी कि हम on our day we are very close to 2 अगर देखा जाए, and when we're not really on our best, we're probably towards the 5th out of these 5 teams that we've discussed today. Yeah. So no surprises here in one days. टेस्ट मैचेस के अंदर भी नो सरप्राइजेस. अगर विन परसेंटेज का देखा जाए तो पाकिस्तान इज एट 4th. 1 or 2 is again Australia and South Africa. This time Australia becoming the better team. The worst is India. They haven't done like अगर उसमें win or draw ratio भी मैं इसमें ऐड करूँ या मिलाऊँ तो India still is the worst test team traveling away from India, like away from home. England consistent 3 पे रहती है. That means they've had their days where they've done well and not done so well. तो वो एक तरीके से competitive I would say team है. And Pakistan is at 4th. वैसे number of games भी बड़े important हैं इसमें. अगर आप देखें I think South Africa has done really well. Only 60 games और उसमें 26 wins is very impressive. Very impressive. Again मैं इसमें वो बोलूँ कि again उसमें फिर एक और चीज़ भी आ जाती है कि साउथ अफ्रीका ने एक बहुत ह्यूज ईरा था जिसमें उन्होंने नहीं खेला, which is 70s and the 80s, जिसमें arguably probably अगर आप देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्रिकेट की स्किल्स का बेस्ट ईरा वही था कि 80s में जो टफ क्रिकेट होती थी, 70s में टफ क्रिकेट होती थी. तो they've kind of like had their luck. But yeah, I would say that given their record post when they started playing cricket, it's been very good. So I would say they would have done well in the 70s as well. So yeah. I wouldn't take anything away from them. कि आप फिर comeback करते हैं अगर इतने tough era के बाद जब आपको competitive cricket नहीं मिली and then you make your mark again क्योंकि as I look at these tables here, they're in the top 2 in both. Right. So they're one of the teams in both formats that you should fare if you're hosting them. So I mean, like there's nothing for granted. Take nothing for granted. उसमें आप नहीं ले सकते इसके बारे में. तो South Africa, Australia, your main best touring sides away from home in ODIs. And Test Pakistan 3 or 4th पे रहता है दोनों formats of the game में, which is decent. I think England bottom पे. England bottom पे रहता है in ODIs और 3 पे है इन टेस्ट मैचेस. इंडिया इंटरेस्टिंगली अगर हम इस डेटा पे वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड को भी प्लॉट करें टू कंप्लीट द पिक्चर, बिकॉज़ उसके अलावा फिर कुछ रह नहीं जाता सिवाय श्रीलंका के. अगर आप उसको भी प्लॉट कर दें तो आई थिंक ये ज्यादा स्टार्ट चेंज नहीं होगा. अच्छा मैं क्योंकि while I have you, I can actually
like just give you numbers in terms of like New Zealand के numbers क्या है. We can probably compare them to see कि वो कहाँ इस table पे fall करते हैं, but I can just give you a fair idea, and that जो numbers आपको मैं बताऊंगा, that gives me कॉन्फिडेंस कि मैंने इनको इस पूरी असेसमेंट में पिक इसलिए नहीं किया था क्योंकि इनके नंबर्स भी इतने इंप्रेसिव नहीं है. तो न्यूजीलैंड के अवे टेस्ट टीम्स, they have had 80 tours. They've just won 14 tours away. So they're definitely below India. They've lost 50. Yeah, definitely below India. ठीक है. परसेंटेज से 17% है लोगों की. हाँ, तो बड़ा खतरनाक है, जिसमें से सबसे हाईएस्ट जो उनका विन परसेंटेज रहा है वो जिम्बाब्वे में रहा है. Okay. और सबसे lowest I think 0% is in South Africa. They haven't won a series in South Africa. Their win percentage in Australia is 8%. India में they've also won 0%. Pakistan में 13%. तो So New do you Zealand, also Now have I'm numbers curious, for West how many- Indies? हाँ मैं वेस्ट इंडीज में बताऊंगा, वेस्ट इंडीज बताऊंगा मैं पे आपको. Now I'm also curious that how many countries have actually win a test match in South Africa. हाँ यार, ये तो क्योंकि आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हो, पाकिस्तान भी है नहीं जीता हुआ, इंडिया नहीं जीता हुआ. तो जीता कौन है? Pakistan actually has won a test series in South Africa. Oh, it doesn't show here for some reason. आपने ड्रॉ दिखा हुआ है ना. एक मिनट. Was it a one day win? So they've won a one day. ये तो मुझे पता है, one day series तो जीती थी उन्होंने. वनडे तो जीती वनडे होगी. तो जीती भी है, उसमें तो मसला ही नहीं है. हाँ, तो actually they haven't then they haven't. Pakistan test. अच्छा, हाँ नहीं है. तो अब जरा जल्दी while it's all fresh in our हाँ. heads, तो बताएं ना वो ये तो West न्यूजीलैंड Indies हो के गया. numbers बताएं. अच्छा, मैं उसके न्यूजीलैंड के मैं आपको ODIs का भी बता दूं लगे हाथों. तो 49 tours में से they've lost 32 and just won 12. So that तो also gives you an idea. वो भी इंग्लैंड से नीचे आता है. हाँ, बहुत नीचे आता है. तो उनका सबसे हाईएस्ट विन परसेंटेज इज अगेंस्ट बनाना है तो जिम्बाब्वे से उनका सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है 60%. और they haven't won in Sri Lanka and West Indies in tests. So I mean, all time में they're probably again number 7 or number 6 somewhere below England and India. दोनों situations में. और अगर मैं वेस्ट इंडीज को देखूं सेम पोजीशंस के लिए टेस्ट और वनडे के अंदर, ये मैं आपको तबरुकतन बेसिकली शेयर कर रहा हूँ. ये भाई ये डेटा प्रॉमिस नहीं किया गया था, ये अलग से दिया जा रहा है. ये अलग से जा रहा है. आप देखें, ये फ्राइज है, ये बेसिकली ये अलग से on the house है. एक्स्ट्रा फ्राइज है with ketchup. On the house है. On the house है. तो वेस्ट इंडीज के टूर्स 82 अवे हैं, और they've out of which they've won 27 and lost 42. तो that's not too bad वैसे. And if I compare them by 82, that's 32% win, right? And if I compare them against other teams, तो उनका सबसे highest percentage has been in Zimbabwe, which I don't count क्योंकि 3. Sorry, कितने tours थे again test में? 82 tours, and they have won about 20 something, right? 27. That's 42. Okay, so 32%. It's better than Pakistan. Or drawn 30. So they take the 4th spot and we go to number 5 in the tests. So ठीक है. Okay. सही है ना. Actually, it's the same number of tours, right? 82 tours. Pakistan have done 82 test matches. Yeah. They've done slightly better. ठीक है. ठीक है. Okay. They've done well in India, by the way. 12 उनके टूर्स हुए हैं जिसमें से 5 हारे हैं और 5 जीते हैं और 2 ड्रॉ हुए हैं. पाकिस्तान में they have done not really well. 7 टूर्स हैं, उनमें से 3 हारे हैं, 3 ड्रॉ हुए हैं और 1 जीते हैं सिर्फ वेस्ट इंडीज. तो they haven't really toured well in Pakistan, but they've toured well in India. They're ऑस्ट्रेलिया का बताओ. ऑस्ट्रेलिया में their win ratio is 27%, जिसमें से 15 टूर्स किए हैं, उसमें उन्होंने 1 ड्रॉ किया, 4 जीते हैं और 10 हारे हैं. Okay. इंग्लैंड का 38% उनका विन रेशियो है वहाँ पर. बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मैं काउंट नहीं करूँगा. अगेन साउथ अफ्रीका में 4 टूर्स हैं, 4 हारे, तो they haven't won in South Africa. And Sri Lanka as well. They haven't won in Sri Lanka as well. Not surprised about South Africa. South Africa is becoming my new favorite. Exactly. तो वो एक तरीके से बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा है. साउथ अफ्रीका ना जाना है ना उनको बुलाना है आपने. and yet I think I would like to actually take it back. मैंने कहा था कि अगर हम इंग्लैंड में जीते हैं तो हमें साउथ अफ्रीका में तो जीतना ही चाहिए. कैसे जीतना चाहिए यार, वो तो सारी दुनिया को हरा रहे हैं.
I think we probably have a better chance against Australia. It's all about perception. हाँ एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा था कि इट्स अ लॉट ऑफ परसेप्शन. अगर ये नंबर्स पे अगर गौर किया जाए तो मैंने आपको बताया कि एग्जांपल्स दिए थे टॉप ऑफ माय हेड कि साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों में हम लोग देयर हैव बीन टाइम्स वेयर वी नियरली वन मैचेस ओवर देयर और गॉड नोज व्हाटएवर. मैं तो इस चीज़ को होल्ड करता हूँ बड़ा लाइक क्लोजली होल्ड करता हूँ इस चीज़ को कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री अगर 3 रिजल्ट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 रिजल्ट्स इन माय ओपिनियन अगर वो पाकिस्तान के फॉर में चले जाते हैं फेवर में होते तो देयर हिस्ट्री आर हिस्ट्री वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट. जिसमें से एक वो होबार्ट वाला टेस्ट मैच है. आई थिंक इफ वी हैड वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन होबार्ट दैट डे तो वो जो कॉन्फिडेंस हमें देता वी कुड हैव वन द सीरीज ओवर देयर इजीली क्योंकि उसी टूर के अंदर वी वन द वीबी सीरीज जो हुई थी वेस्ट इंडीज के साथ ना. तो वी वर ऑन आवर पर्पल पैच आई वुड से 90s के अंदर. और लाइक अगर मैं तबरुकतन बाकी दो भी बता देता हूँ आप लोगों को जो मैं समझता हूँ कि अगर वो हम जीत जाते तो आवर टाइम्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. एक तो 99 का वर्ल्ड कप का आई थिंक अगर 99 का वर्ल्ड कप फाइनल हम जीताते तो वो जो ऑस्ट्रेलियन डोमिनेशन वहाँ से स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान की डोमिनेशन स्टार्ट होती लाइक कंटिन्यू होती आई वुड से क्योंकि 90s में पाकिस्तान की डोमिनेशन थी एंड देन 2000 में भी वो कंटिन्यू होती एंड आवर लाइव्स एज फैंस वुड हैव बीन सेट फॉर एवर लाइक क्योंकि फिर एक तरीके से हमें जीती हुई टीम्स हमेशा मिलती. और थर्ड व्हिच आई थॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट 1996 क्वार्टर फाइनल कि अगर वो हम जीत जाते तो वी वुड हैव इजीली बीटन श्रीलंका इन द फाइनल्स इन लाहौर. तो आप इससे इमेजिन करें इन 3 मोमेंट्स में आपके 3 वर्ल्ड कप्स उस 90s के अंदर अगर आप एक ईरा के अंदर 3 वर्ल्ड कप्स जीत जाओ 90s के अंदर 92 96 99 so that kind of like that just that's men against boys at the point right. So which is why I really or इसी वजह से and there's never been a better team that could have done it यार ये भी exactly और इसी वजह से जो बाकी 2-3 स्लाइड्स जो उसमें रखी हुई हैं वो बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करती हैं which we can discuss in the next episode. So yeah, so I think to conclude, we're in the top 3 or 4 अगर आप बाकी टीम्स को भी ऐड कर लें ठीक है. Maybe वो वेस्ट इंडीज को डालने की वजह से probably we slipped down to number 5 in the tests, but ODI में फिर भी we're in the top 3 ठीक है. Exactly. So that gives you like it's fair. It's not bad. यार इतने बुरे नहीं हैं given कि हम कितने turmoil से गुजरे हैं हमारी क्रिकेट को कितना कॉर्नर किया गया है. That's all part of the record, right? तो मतलब वो सारा डेटा इसमें शामिल है. 10 साल रिसेंटली हम लोग ने होम में 10 साल जेल में था. मैं 10 साल जेल में था. यार हमें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए अपने क्रिकेट को अपने क्रिकेटर्स को और इन नंबर्स अपने आप को भी इज्जत देनी चाहिए. हम लोग थोड़ा सा ना उस कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि कभी कुछ किए नहीं. तभी मैंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में जो बात करी थी जो ट्रस्ट द प्रोसेस के ऊपर बात करी थी वो यही करी थी कि जो लोग ज़्यादातर क्रिटिक करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर मैं समझता हूँ वो रियल फैंस भी नहीं है. वो इसलिए क्योंकि इनमें से 90% लोग जो है ना वो आते ही तब हैं जब कोई वर्ल्ड कप हो रहा होता है और या कोई बड़ी पाकिस्तान जीत रहा होता है या पाकिस्तान जीत रहा होता है या इंडिया से मैच हो रहा होता है. दैट्स इट. 90% लोग इस वक्त उठकर आते हैं और बाकी जो उनकी पाकिस्तान की पूरी जर्नी होती है उसमें कोई उनको नहीं पता होता. यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट जो टीवी पे आते हैं वर्ल्ड कप पे बात कर रहे होते हैं कि क्यों नहीं जीते क्यों. ओ भाई तुझे पता भी है कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान किस पोजीशन पे थी. तो अगर उसके बाद आकर पाकिस्तान अगर दे डू वेल और डोंट डू वेल तो उसको उस पर्सपेक्टिव में देखो ना यार. ऐसी अचानक से उठते ही कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत जाता. एक जर्नी होती है पूरी. तो उस तरीके से उसको पर्सपेक्टिव में रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान टीम्स यू कैन क्रिटिसाइज फाइन but you need to put it in perspective कि how well they've done compared to other teams. Like we mentioned कि Australia don't really tour well in Pakistan. हम पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर्स की तो बहुत बात करते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया डोंट रियली टूर वेल इन पाकिस्तान. और अब ये भी तो देखिए वो भी तो सारे सेटबैक्स हैं कि फॉरेन टीम्स ने आना छोड़ दिया एंड वी आर प्रोग्रेसिंग एंड गेटिंग बेटर. बहुत सारी चीजें. अच्छा एक मोमेंट और है वैसे ज़ैब जो कि आई थिंक तुमने जितने मेंशन किए ना वो सारे के सारे मोस्टली ओडीआई से रिलेटेड हैं होबार्ट वाले के अलावा जो बाकी दो हैं. एक और इवेंट है जिसने आई थिंक हमें काफी पीछे धकेल दिया बिकॉज़ उस टाइम में हमारी टेस्ट टीम बन चुकी थी और बहुत बेहतर थी. And that was actually जब आमिर और आसिफ पे बैन लगाए इंग्लैंड में. उसमें जब हमने पैसे खाए हैं
उस टाइम पे भी हम बजा रहे थे इंग्लैंड की बेसिकली इंग्लैंड में। I was hoping Farrukh bhai you would not bring this up. मैं यार नहीं, लेकिन अगर हम अपनी बिटर रियलिटीज को फेस नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे जिंदगी में? नहीं, ये बात नेक्स्ट उसमें बोल सकते थे वैसे कि जो स्लाइड है ना इसकी ज़ेब की नेक्स्ट, अगर आप देखो ना वो जो उसमें ये इरास को कंपेयर किया मैंने, इरास से कंपेयर किया है, तो मैं उस पे ज्यादा इस बात पे कहता था। खैर आपके अब ये चले वो डिटेल में तब चले जाएंगे, बट ज़ेब डिफाइनिंग मोमेंट्स की बात कर रहा था, और बिकॉज हम टेस्ट और ओडीआई दोनों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक ये डेफिनेटली डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम पे आपकी टेस्ट टीम बन चुकी थी। वी हैड ग्रेट टेस्ट बॉलर्स, आमिर आसिफ का कॉम्बिनेशन वाज अमेजिंग। और देखो वही मैं कह रहा हूँ कि हम मतलब इतना डेड फुट वाली नो बॉलिंग कराते हुए भी हम उनकी बजा रहे थे। इट्स नॉट लाइक हम हार रहे थे कोई सीरीज में, वी वर डाउन एंड आउट और एनीथिंग। नो, वो मैन ऑफ द मैच था यार, मोहम्मद आमिर वाज मैन ऑफ द मैच with all the distraction and everything, with all the distractions and everything going on. मतलब आपका एक बच्चा बैठ के सट्टे भी लगा रहा है, साथ में आपको जिता भी रहा है। मतलब कुछ इससे बेहतर हो सकता है? वो हारने के सट्टे नहीं लगा था ना, वो नो बॉल के सट्टे मार रहा था सिर्फ। वो खैर अलग डिबेट है, वो एक अलग डिबेट है कि मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग क्या उसका डिफरेंस क्या है, कौन व्हिच इज वर्स, क्योंकि हर क्राइम की डिग्रीज होती है ना, लाइक यू कांट कंपेयर रेप वर्सेस थीव, लाइक नहीं यार, स्पोर्ट्स के अंदर इफ यू आर सेलिंग योरसेल्फ और योर टीम, it's the same thing, right? आप मुझे जानते हैं ना कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ इस मामलात में, बट इवन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं उसको एक जाविये से नहीं, मैं नहीं देखता कि यार मैच फिक्सिंग आई थिंक इज द बिगर क्राइम, और स्पॉट फिक्सिंग ऑल्दो इट्स अ वेरी हीनियस क्राइम एंड शुड बी पनिश, और उसके जो उस क्राइम में पार्ट लेते हैं दे शुड नॉट प्ले, but I don't think it's as serious as match fixing. अच्छा, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। मैं एक्चुअली दोनों को सेम इसलिए समझता हूँ क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो डिफाइनिंग मोमेंट्स होती हैं। आपकी एक स्पॉट फिक्सिंग जो है आपको पूरा मैच भी हरा सकती है, और आप लास्ट बॉल में स्पॉट फिक्सिंग बॉल करा दो, obviously वो चीजें बात होती है। आप बेशक पहले ओवर में करा दो, आप बेशक पहले ओवर में स्पॉट फिक्स करा दो और वो बॉल जो है विकेट पे जाके लग जाए, आपने तो नो बॉल करा दी और वो बंदा सेंचुरी मार दे और आप मैच हार जाए, तो फिर तो वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है कुछ चीजें। ठीक है, खैर चलें बाद में कभी बात करें। वेरी गुड जॉब डन ज़ेब, बड़ी जबरदस्त आपने इसको बना के ना हमें दिया है ये। अब अगर हम किसी से डिस्कस करेंगे ना इन टॉपिक्स के ऊपर, तो हम टीम तो ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास तो नंबर्स हैं। हाँ, नंबर्स लाइक कोई आप हाँ ओपिनियन आप जो बनाते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव इन। तभी मैं इस ख्वारियों में घुसा हूँ इतनी देर में, एज फारूक वाज मेंशनिंग अर्लियर, कितनी देर में जो है ना डिफेंस नहीं पहुंचती बच्चियां नाज़ामत से, तो इतनी देर में इतना एक मैंने जो ये कंपाइल किया है इसी वजह से किया है कि भाई अगर कोई ओपिनियन रखना है किसी चीज़ के ऊपर ना, तो थोड़ा सा होमवर्क कर लो ताकि कोई ढंग का ओपिनियन मुंह से निकले, यानी कि बस इमरान नज़ीर को वापस लाओ और इमरान फरद को खिलाओ, ये नहीं करना यार, थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। कामरान अकमल को निकालो, हाँ ये करो वो करो, ये करो। खैर एक तो निकल गया अकमल बाहर, अभी दूसरे की भी इतना वो नहीं है। आपका चिल्लास काम कर रहा है। खैर एनीवे, अभी तो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है कि मेरे फर्रुख शायद मैच जॉगिंग कर रहा है, सांसों की आवाज नहीं आ रही है। चलो सेट है भाई। यार जॉगिंग नहीं कर रहे, जरा सुबह सांस ले रहे हैं बाहर आके, चहलकदमी तस्कीन बख्श रहे हैं। चहलकदमी। चलो ठीक है फिर, चलो कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। चलो सेट है यार, चलें भाई। वेरी गुड एनालिसिस है, वेरी गुड एनालिसिस। क्या होता सर, कंपाइल किया था एनालिसिस आप लोगों ने करी है। If I was to say कि मेरा परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ, I would say बिल्कुल चेंज हुआ। एक चीज पर्सपेक्टिव में पुट कर दिया ना आप लोगों की। हाँ, मैं तो साउथ अफ्रीका का फैन हो गया हूं बस इस पूरे बात के डिस्कशन के बाद। हाँ, और किसी हद तक जिम्बाब्वे का भी वैसे। हाँ, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए यार। उन्होंने कुछ टीमों को उन्होंने एट पार रखा है। मतलब आप देखें ना कि बांग्लादेश भी वो नहीं कर सकी जो जिम्बाब्वे ने किया। इतनी लूज नहीं है वो, फंसाया है उन्होंने टीम्स को। हाँ, चलो यार, चलो गाइस, thanks guys, take care. And that's it for our show. The content on our episode is a collective effort by the resident drunk groomers, that is myself, Zaib, Sahir, Farrukh, Zan, and Naveed. Our theme music is courtesy Taimu Salahuddin, aka Nuru, a highly rated and extremely talented Pakistani singer-songwriter and YouTuber. To check his work, please follow and subscribe to our podcast on Spotify, Podbean, YouTube, Google, and Apple Podcast. You can also leave comments and connect with us on our Facebook page, facebook.com/drunkrumors. Until next time, take care.